All right, so hi everyone, this is your anchor Lakshmi, and I hope that you all are doing good. So, yes, one more time in Hindi. Hi, मैं हूँ आपकी एंकर लक्ष्मी बिकॉज आप हमेशा मुझे इंग्लिश हिंदी दोनों में ही सुनते हैं तो इसलिए हाय मैं हूँ आपकी एंकर लक्ष्मी और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में एंड आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे बट यस जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तब तक मुझे भी तसल्ली नहीं होगी कि हाँ हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स एकदम बढ़िया हैं सो कम ऑन एवरीवन जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हमारी टीम पंखुरी यहाँ पे आप सभी के रिप्लाईज का वेट कर रही है कम ऑन जस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स एंड आई एम गोइंग टू ओपन द चैट बॉक्स जस्ट नाउ. And now I can see, so there are so many hi and hello. So hi everyone, I can see so many participants are there. Hi Fiza, hi Garvit, hi Niharika, hi Radha. So, okay, so we are gonna create today reception look. Okay, हम आज reception look create करने वाले हैं. But I want to ask from you all कि आप लोगों को किस टाइप का रिसेप्शन लुक पसंद है लाइक डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होते हैं सपोज कोई ऐसी भी ब्राइड होती हैं जिनको एकदम सॉफ्ट सा लुक पसंद होता है कोई ऐसे होते हैं जिनको ग्लिटर वाला लुक पसंद होता है सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप सभी का पसंद कैसा है एंड आप सभी लोगों को कैसे टाइप वाले रिसेप्शन लुक पसंद आते हैं सो कम ऑन बताइए मुझे मैं चैट बॉक्स में वेट कर रही हूँ हमारे सारे रिप्लाईज का एंड तब तक आपको मिलवाते हैं हमारे ट्रेनर से सो हाय दिव्या. Can you hear me? If you can hear me, then please say a hi to all the participants here. Hi Lakshmi. Hi everyone. Yes, Lakshmi Hello. can hear you. Hi. So yes, you can hear your trainer Divya. So she is your trainer for today. And now I would like to say that your host Saloni is here. Saloni, can you say a hi to everyone? Yeah, sure. So, hi everyone, this is Saloni, your host from Team Pankhuri, and I hope everybody is doing absolutely great. Yes, that's great. So now I can see there's only one reply that Nityam likes like simple and without makeup type look. That's great. I think you should give me a high five because I too like that type of look because मुझे भी बहुत ज्यादा glittery look नहीं पसंद होता है. And जब भी आप मुझे स्क्रीन पे देखते होंगे तब मुझे हमेशा आप लोग देखते होंगे एकदम न्यूड लुक करके एकदम न्यूड मेकअप करके मैं हमेशा आती हूँ तो मुझे भी वैसा ही पसंद है बट हाँ जब भी मैं कभी पार्टी में जाती हूँ तो अगर मैं जिस टाइप की ड्रेस पहनती हूँ सपोज मैंने कुछ ग्लिटर टाइप वाला ड्रेस पहना हुआ है तो मैं फिर ग्लिटरी मेकअप ही करती हूँ क्योंकि मुझे उस समय वो पसंद आता है सो इट डिपेंड्स ऑन टाइम की हम और इट डिपेंड्स ऑन ड्रेस के हम कैसे कैसे ड्रेसेस पहन रहे हैं एंड कौन से फंक्शन में जा रहे हैं सो उस सब पे डिपेंड करता है. Okay, so do we have to join on Zoom app? No, Vaishali ma'am, you don't have to join on Zoom. We are live on YouTube only. And yes, so एक दो और हमारा है simple and glam look. Okay, nude natural makeup look. So I guess कि बहुत सारी ऐसी girls और ladies हैं यहाँ पे जिनको nude makeup बहुत ज्यादा पसंद है. So I want to ask to Divya कि दिव्या हम आज किस टाइप का look करने वाले किस टाइप का reception look आज हम create करने वाले हैं? Actually, yes, nude and glam look सबको ज़्यादा पसंद आता है. But today what we are going to do is going to be in between. ना ही बहुत nude होगा, ना ही बहुत ज़्यादा colors and बहुत ये bold होगा. But reception makeup है तो reception makeup usually थोड़ा bolder side पे होता है. And wedding makeup जब हम brides की बात करते हैं तो वेडिंग मेकअप थोड़ा न्यूड्स की साइड पे होता है एंड रिसेप्शन मेकअप थोड़ा बोल्ड की तरफ होता है. सो विल गो इन बिटवीन. आज हम जो काम कर रहे हैं वो दोनों के बीच में रहेगा एंड लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट. Okay, so we will see that, and I want to know that I know कि यहाँ पे काफी लोग शादीशुदा होंगे. Everyone is married. Many of them are married. So I want to know कि जब आपकी शादी हुई थी तो आपकी शादी में आप लोग ने कैसा लुक क्रिएट किया था? I want to see this answer. So I have opened my chat box and मैं देखना चाहती हूँ कि सभी के आंसर्स कैसे कैसे आते हैं कैसे कैसे लुक्स आप लोग ने क्रिएट करवाया था अपने मेकअप आर्टिस्ट से. So जब तक आप लोग आंसर करते हैं सी मेरी तो शादी नहीं हुई है सलोनी की भी शादी नहीं हुई है बट दिव्या इज मैरिड. सो दिव्या से हम पूछेंगे कि दिव्या आपकी शादी में आपने कौन सा लुक क्रिएट करवाया था?
वेरी फ्रैंकली लक्ष्मी, एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मेरे को मेकअप का जीरो नॉलेज था. मेरे को काजल और लिप बाम के अलावा कुछ प्रोडक्ट्स ओह आते भी नहीं थे अप्लाई करने. तो मेरे को तो ये सब पता नहीं था कि कॉन्टोरिंग भी होता है, फाउंडेशन, कंसीलिंग, इतनी सारी चीजें होती है, लिप्स रीशेप होते हैं, आईब्रोज, मतलब मेरे को ये कुछ भी आइडिया नहीं था. सो व्हेन आई गॉट मैरिड, सो तो जो मेरा मेकअप था ना, मैंने उनको सिर्फ इतना बोला था कि मेरे चेहरे पे ना ऐसे कुछ तो ऐसे लगाया हुआ है, बस नहीं दिखना चाहिए, एंड आई शुड प्रिटी, दैट्स इट व्हाट आई हैड टोल्ड हर. मेरे को बिल्कुल जीरो नॉलेज था व्हेन आई गॉट मैरिड बैक देन. हाँ, ये चीज तो And होती है, मतलब काफी. यस सलोनी, यू वांट टू से समथिंग? no, I think ये काफी relatable चीज है. अगर कोई मुझसे भी पूछेगा ना, if I'm getting married in next 8 or 9 years, और somebody asks me कि भाई कैसा चाहिए, क्या चाहिए, I'll be like, देखो कुछ ऐसा कर देना जो ऐसा लगे कि कुछ खास किया नहीं गया है, एंड बस बहुत लाइट सा बेस कर देना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे. आई एम ऑल गुड. बट जो भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जो आपका वेडिंग लुक होता है, उसको मतलब बेस तो काफी हैवी रहता है कि नहीं दिव्या? यस, तो बेस हेवी रहता है, बट एट हम्म द सेम टाइम इट शुड लुक नेचुरल ऑल्सो. मतलब हेवी बेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि चेहरे के ऊपर एक अलग सी लेयर दिखनी चाहिए. द फन ऑफ मेकअप इज दैट यू अप्लाई एवरीथिंग एंड एवरीथिंग लुक्स नेचुरल. ओके, सो ये हम ट्राई करते हैं, बट काफी लोगों से नहीं हो पाता है. मेरे से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं थोड़ा सा ही लगाती हूँ कभी फाउंडेशन, एंड वो बहुत ज्यादा उभर के दिखता है. सो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जस्ट रिमूव ही कर देती हूँ. भाई मेरा फेस ऐसे ही अच्छा लग रहा है, लाइक देखो मैंने अभी फाउंडेशन भी नहीं लगाया हुआ है, एंड वो ऐसा ही सेट दिख रहा है, तो मेरे को भी ऐसा ही मेकअप पसंद है. एंड ये काफी लोगों का यही कंसर्न रहता है, अगर उनके वेडिंग पे हो, चाहे उनके रिसेप्शन पे हो, सब यही बोलेंगे ना ब्राइड, क्योंकि मैंने काफी मेकअप आर्टिस्ट से पूछा हुआ है, एंड वो खुद भी शेयर करते हैं कि जब भी किसी ब्राइड का मेकअप करो एंड उनको पूछो कि मैम आपको कैसा लुक चाहिए, तो दे विल से कि बस एकदम नॉर्मल सा, एकदम सेटल दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम उभर के दिख रहा है कि हाँ हमने फाउंडेशन लगाया हुआ है. बट मतलब मेरे साथ कैसे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, जब मैंने देखा हुआ है कि यार अगर रिसेप्शन भी है या फिर वेडिंग है, तो उस दिन मतलब कि ऐसे मेकअप कर देते हैं, लाइक वो अलग से दिखता रहता है यार, और वो ब्राइड भी परेशान होती रहती है. सो हम नहीं चाहते कि आप कभी भी ऐसा मेकअप करें, इसलिए दिव्या आप सभी को आज एकदम सेटल लुक सिखाने वाली है रिसेप्शन के लिए. एंड वो बेस जो है वो तो आप आई गेस कि अपने वेडिंग लुक में भी यूज कर सकते हैं. इज इट राइट दिव्या? नहीं, आज जो हम बेस करेंगे, आपको टेक्निक समझ में आ गई ना आज की, तो ये टेक्निक से आप बेस, सिंपल मेकअप, रिसेप्शन मेकअप, वेडिंग मेकअप, किसी भी मेकअप में अगर आप टेक्निक पकड़ लो ना, तो आप वर्क कर पाओगे. बट इफ यू गो जस्ट ऑन द क्वांटिटी एंड द वे, हम मतलब सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे ही ज्यादा ध्यान दोगे ना, तो फिर देन इट इज हार्डकोर रिसेप्शन लुक होगी. यस. सो सबसे मेन चीज है टेक्निक सीखना, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है. सो आप सिखाते हैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को टेक्निक एंड आज का रिसेप्शन लुक, तो आई गेस कि अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हमारा आज का सेशन. यस. यस सलोनी, हेलो. Yeah, I'm so sorry. I was speaking and I just realized I was on mute. That's okay. It used to happen in online sessions. Okay, everyone. So now it's time for me to say a bye-bye, everyone. मैं जा रही हूँ, but your host Saloni and your trainer Divya is here. So अब आप लोग इनके साथ सीखिए and enjoy करिए आज का Sunday session. So thank you so much, everyone. Thank you, Saloni. Over to you. Thank you so much, Lakshmi. So, hi everyone, this is Saloni, your host from Team Pankhuri, and this is Divya Jain, our trainer. She'll be the one to teach us all about that glamorous, glamorous reception look. So, I hope everybody is really excited because I was seeing all the chats in here. So, abhi se hi, there are few questions. So, don't worry, guys, we will be taking the questions also. And I hope everybody is excited as I can see in the comment section. But before starting the session, there are just few things I want to tell you all about, and then we will start with the session itself. Okay? So the very first thing is that we are going to have this session in both Hindi and English. Deva will be teaching everything in Hindi and I'll be translating the same in English. Okay? So दिव्या सारी चीजें हिंदी में बता रही होंगी and मैं वही सारी चीजें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगी ताकि आपको कोई भी इश्यू ना हो लैंग्वेज को लेकर के. Second thing is that if in case you need to know the products or you need to know any other thing,
Then all the products are uploaded on the app. You can go there and you'll be able to check out all the products too. Deva will also be telling you, like, she will be naming out the products that she'll be using. If in case you get confused, you can always go back to the app. You will find the products there, and you will also get the recording of the session. But for the recordings, you will have to pay us 5 rupees, and you will get the access of the recording for lifetime. Okay. सो जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज होंगे वो दिव्या बताएंगी आपको. बट इफ इन केस आप कंफ्यूज हो जाते हो किसी भी चीज में, तो आप वापस जा सकते हो अपने ऐप के ऊपर. ऐप पे आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. प्लस अगर आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह चेकआउट करनी है तो वो भी आपको मिल जाएगा. बट जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो पेड होंगी, तो आपको 5 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग्स के लिए, एंड देन आप रिकॉर्डिंग्स चेकआउट कर सकते हैं. ओके. So yes, and the makeup that will be taught today will be a transfer-proof makeup, of course, because this is a makeup that is you are going to do on a bride, right? We cannot do a makeup that is not transfer-proof. So the makeup that will be taught today will be transfer-proof, and everything will be taught from the very basics. It will be understandable for everybody, even if you're a beginner. Okay? अगर आप beginner हो तब भी आप हर चीज समझ जाओगे, because we understand कि जरूरी नहीं है कि सबको हर चीज पता हो. फॉर एग्जाम्पल मैं, तो ठीक है, अगर मुझे समझ में आ रहा है तो सबको समझ में आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके. So yes, guys, I think we can start with the session. Over to you, Divya. Yes. Thank you, Saloni. हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या जैन एंड आज हम सीखेंगे रिसेप्शन ग्लैम लुक. सो जस्ट डायरेक्टली लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं अपना चेहरा क्लीन करूंगी विद द हेल्प ऑफ अ वेट वाइप. सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अपना मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने फेस को क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर एक वेट वाइप. अगर आपका जो भी आप ब्राइड कर रहे हो, तो अगर चेहरे पे बहुत ज्यादा डस्ट है, या कई बार ब्राइड हल्दी मॉर्निंग में खेलते हैं एंड फिर रिसेप्शन के लिए आते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग. सो मेक श्योर यू अप्लाई अ क्लिंजर फेस प्रॉपर. पहले उनको फेस वॉश करने बोलना, उसके बाद आप क्लिंजर से फेस क्लीन करना, एंड उसके बाद लास्ट में वेट वाइप से फाइनली क्लीनिंग करना. बट एज मेरा भी चेहरा काफी क्लीन है, तो मैं सिर्फ वेट वाइप यूज कर रही हूँ. So once you are starting with the makeup, no, you need to tell your client that she needs to wash her face using either a cleanser or anything that suits her face. So that is the very first thing to start with your makeup. Okay. Now, since Divya has already washed her face, so just in order to show you all, we are just using a wet wipe to clean our face. But the very first step will be to tell your client that she needs to wash her face using a cleanser. ओके. अब इसके बाद हम मॉइस्चराइज करेंगे. तो मॉइस्चराइजर मैं यूज कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड PAC. ये ऑयली, ड्राई, नॉर्मल सारी स्किन्स को सूट होता है, बट मेजरली इट वर्क्स वेरी वेल फॉर कॉम्बिनेशन, नॉर्मल कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन. ड्राई स्किन के लिए अगर बहुत एक्सट्रीम ड्राई है तो दिस माइट नॉट वर्क. थोड़ा बहुत ड्राई है तो दैट्स ओके. So next step after cleaning our face will be moisturizing our face. So the moisturizer that Divya is using here is by PAC. This moisturizer goes for almost all of the skin, especially if you have a combination skin of, or you have a normal skin, or you have an oily skin. It also goes with the skin that is little on the sensitive side and on the drier side. But if in case you have very dry skin, please do not go with this moisturizer, because then you will need to use a moisturizer that is very heavy, because you have very dry skin, and this moisturizer is not that moisturizing if you are on a very dry skin type. Yes, Divya. Okay, after applying the moisturizer, we'll apply a primer. जो primer मैं आज use कर रही हूँ, this is a very natural finish primer. And अब जो इसके ऊपर products भी लगाओगे ना, वो इतने अच्छे से skin में blend हो जाएंगे कि
just because of the primer, the makeup will look more on the natural side. So the primer that I'm using is from the brand FC. FC ka primer hai. That is fashion color. So after doing the cleansing and the moisturizing part, we are going to prime our face. So for priming, Divya is using a primer by SC, that is, what was it? Fashion Color. Yes. Okay, SC. So yes, right now Divya is using a primer by Fashion Color. This is a primer that is going to help you to get a very natural effect on your face. Plus, it is also going to provide you a good base to start with. So remember, primer is very important when you're starting with any kind of makeup. एंड जब भी मैं कोई भी प्रोडक्ट लगा रही हूँ ना, सिर्फ चेहरे पे नहीं लगा रही हूँ, आंखों के लिड्स पे, गले पे एंड ईयर्स पे भी लगा रही हूँ. कभी भी मेकअप सिर्फ चेहरे पे नहीं होता है. आफ्टर डूइंग द फेस मेकअप यू गो बैक एंड चेक योर ईयर्स एंड नेक ऑल्सो. थोड़ा सा बेस आपको गले पे भी लगाना है और कान को भी कवर करना है. तो इसीलिए मॉइस्चराइजर प्राइमर भी वहां पे लगना जरूरी होता है. So you just saw that Divya is applying all the products not just on her face but also on her neck and on the ears. So it will be very awkward to see that only the face is being covered, right? It will be very like it will not look very nice. So whenever you're doing any kind of makeup on the face, you always have to apply all the products on your neck and also on your ears. Yes, Divya. Okay. So next I'm going to move towards my eye makeup. Make sure primer लगाने के बाद 30 seconds to 1 minute का आप break ले रहे हो ताकि primer अच्छे से absorb होके set हो जाए. उसके बाद मैं eye makeup start कर रही हूँ. तो for eye makeup I'm using Tarte Shape Tape brand. Tarte का है ये and the shade is medium as a eye base. ये concealer में use कर रही हूँ एज अ आई बेस. एंड एज आई सेड, हम बहुत हैवी या फिर एकदम ट्रांसपेरेंट आई मेकअप नहीं करने वाले हैं. तो इसको भी थोड़ा कम ही, बहुत हैवी बेस नहीं करना है आंखों पे, मीडियम ही बेस करना है. So next you can see that right now after applying the primer, we are applying the concealer on our eyelids. Now the concealer that Divya is using here is by Tarte and in the shade medium. Now now the whole base that we're creating for the eyes, that is not going to be very heavy. We're just going to keep it a little a little on the medium side, not very light, not very heavy. Otherwise, you're going to end up creasing your whole eye makeup. अभी जब मैं खुद पे कर रही हूँ, when you are doing on someone else, so what will you do? दोनों को एक साथ ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लोगे और ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर दोगे. बट व्हेन आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, व्हाट आई नीड टू डू इज, एक आंख को मैं ब्लेंड करूंगी एंड आई विल वॉच इट विद माई अदर आई एंड तुरंत उसको सेट करूंगी, फिर मैं दूसरे आंख पे मूव करूंगी. So whenever you're working on any of the client, what you need to see is that you are blending all the products simultaneously. That means if you're blending your one eye product, you need to blend the other eye product right then and there. Once you have blended the product, you are going to set it in. For setting it in, you are going to use a translucent powder, or I could say a loose powder, to set the product and to help the makeup to not crease. Okay. Now there are a lot of questions here regarding the recordings and everything. So I will just quickly repeat the thing so that it gets clear with everyone. Okay. So you will get the recordings, PDF, and you will get the certificate of the session. But all of these things are available only on the app. And for all three of these, you need to pay us. So if you pay them individually, it will cost around five rupees. But if you buy the whole bundle, like you buy all three of them together, it will just cost you 10 rupees. Okay? So जो भी आपको ये सेशन हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, आपको उसका पीडीएफ भी मिलेगा एंड प्रोडक्ट भी मिलेगा. नाउ अगर आप ये सब कुछ ले रहे हैं एक साथ तो वो आपको 10 रुपए का पड़ जाएगा. बट अगर आप सब कुछ इंडिविजुअली ले रहे हैं तो वो आपको 5 रुपीज का पड़ेगा ईच. ओके. एंड ये सारी चीजें आपको ऐप पे मिल जाएंगी. आप ऐप पे जैसे ही जाएंगे आपको मिल जाएगा. एंड मैं लास्ट में अपनी स्क्रीन शेयर करके भी आपको एक बार दिखा दूंगी. ओके.
In the end, I will show it to you in the screen share also, that where you are going to find all these things. Okay? Yes, Divya. Okay, so my eye base is done. मैंने मेरा आई बेस कंप्लीट कर लिया है. सो यू ऑल कैन सी एकदम इवन दिखना चाहिए आई बेस, तो वर्किंग इजी हो जाती है. मूविंग अहेड, नाउ विल ऐड इन द कलर्स. सो सबसे पहले हम लोग एक ट्रांसलूसेंट शेड लेंगे. ट्रांसलूसेंट शेड इज बेसिकली अ ट्रांजिशन बिटवीन योर स्किन कलर्स एंड द कलर्स टू कम ऑन योर आईज. जो आंखों पे अगर आगे आप जो कलर्स यूज करोगे वो और स्किन के बीच में एक जो शेड क्रिएट होता है, दैट इज अ ट्रांसलूसेंट शेड. मैं पैलेट यूज कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड मॉर्फी एंड द पैलेट नेम इज जेम चार्ल्स. एंड इसमें से मैं ये लाइट ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ. Okay. So next what we are going to do is we have created an eye base here. Now we are finally going to start with our eye makeup. Divya, can you just try coming a little close to the camera? Um, Yeah, if you just move a little close, no, it will be fine. is this okay? Yeah, yeah. Okay. So yes, right now you can see we are working with the transitional color here. So as a transitional color, we are using a light brown shade. So basically, transitional color is a color that is in between the color of your skin and the color that you are going to work with. So here you can see we are using light brown as a transitional color. Also, everyone, please try to understand that we have a lot of languages here, but the most common languages are English and Hindi. So that for everybody to understand and for everybody to be it a little easy, we are actually taking the session in both the languages. Okay. And the palette that Divya is using here is by Morphe, and the name of the palette is James Charles. Morphe का James Charles palette use कर रही है दिव्या. Yes, Okay. Divya. So going ahead, I'm going to go a bit in a darker tone of a brown. Brown का ही मैं और darker shade ले रही हूँ. So from this palette, I'm taking this shade, the darker brown shade. So next So हम लोगों ने अपना transitional color use कर लिया है, and now we are moving forward to the major color, like we are creating the base for the color. So for that we are using a dark brown shade here. हम dark brown shade यहाँ पे use कर रहे हैं. दिव्या, आपके brushes कौन से होंगे? for this, I'm using Morphe and Sigma. दो अलग-अलग brands के brush है. This is from Sigma and this is from Morphe. Okay. And So for the this is prices, a flat brush, एक छोटा सा flat brush है, and blend करने के लिए Morphe का एक छोटा narrow fluffy brush use कर रही हूँ मैं. okay. So Divya is using brushes from two brands. One is Morphe, one is Sigma. So for applying the color, she is using, you can see the flat brush by Sigma. And for blending the color in, she is using a brush by Sigma, sorry, from Morphe. And that is a small fluffy brush that she'll use to blend in the colors here. Okay. Now for the paying part, you just need to go on the app. Once you will see, like, let's suppose that you're paying for the recording. Once you will click on uh, the recording, you will get the option of buy now. Just click on that and you will be able to buy the whole package, or maybe just one thing that you want. Okay, so Divya, one question is there. Hmm. Why is it important to apply the primer? Primer creates a layer between moisturizer. Primer ना moisturizer और skin skin moisturizer and products के बीच में एक layer create करता है. मतलब आपके moisturizer को skin पे lock कर देता है. It doesn't let your skin dry up. And जो आगे products आने वाले हैं उसके बीच में एक layer create करता है. Layer create करता है मतलब skin को थोड़ा सा एक protection provide करता है. एंड सेकेंड यूज उसका ये है कि जो भी आप मेकअप प्रोडक्ट्स इसके बाद यूज करोगे उसको वो ब्लेंड करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, प्लस मेकअप प्रोडक्ट्स को सेट भी बहुत अच्छे से करता है. दैट्स व्हाई प्राइमर इज वेरी नेसेसरी. प्लस स्वेट लॉक करता है.
एंड प्रोडक्ट्स को ब्लैकिश पड़ने से, ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगाओगे ना तो स्वेट बाहर आएगा एंड आपका फाउंडेशन धीरे धीरे काला पड़ते जाएगा और कीकी होते जाएगा, बाहर निकलते जाएगा स्किन से, बट प्राइमर वो नहीं होने देगा। Okay, so that means primer are really important as they are going to create a layer between, like, not a layer, but like a wall kind of thing between your moisturizer that you have applied and uh, like the product that you're going to apply. So in this way, you will not end up getting very dry skin. It will actually help the moisturizer to set in, to lock the moisturizing, and also it will create a little bit of base and it will help your product to blend in very easily. Okay, so these are some of the importance of why you need to use a primer and how important it is. ओके, सो गाइस एक चीज मेरे से स्किप हो गई है, दैट इज अप्लाइंग द लेंसेज। सो मैं और आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट लेट्स अप्लाई द लेंसेज एंड देन विल मूव बैक टू द मेकअप। आई एम सो सॉरी, ये एकदम स्टार्टिंग में करना है, इवन बिफोर अप्लाइंग द मॉइस्चराइजर। चेहरा क्लीन करते ही सबसे पहले आप जो करोगे वो है लेंसेज लगा लोगे, उसके बाद आप स्किन प्रेपिंग स्टार्ट करोगे। सो Okay. I'm using color trend के lenses in the shade gray shade है and the brand is color trend. Okay, so abhi what we are doing is we are uh, applying the lenses here. So they just forgot about the lenses. So if you are going to apply the lenses, always apply the lenses before starting your makeup, even like before applying the moisturizer. So basically, before starting the your whole makeup routine, you have to apply the lenses. The lenses that the we're using here is by Color Trend in the shade gray. ओके, तो ऐसा पैकेजिंग आता है लेंसेज का, आपको ये फ्लैप ओपन करना है इस तरीके से, फिर लेंस को फिंगर पे निकाल लेना है ऐसे पकड़ के, एंड देन प्लेस इट इन्वर्टेड प्लेस करना है आपके फिंगर पे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आंखों को स्ट्रेच करना है, बिकॉज वी हैव टू पुट द लेंसेज इन द आईज, एंड कॉर्नर की तरफ ऊपर देखना है। लेंसेज हमेशा व्हाइट एरिया में लगाए जाते हैं, नॉट ऑन द आई बॉल। आईज का जो व्हाइट एरिया होता है ना, वहां पे लेंसेज को प्लेस किया जाता है, एंड फिर आई बॉल मूव करते हैं तो लेंसेज कैच हो जाती है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लुक ऑन द अदर साइड एंड place my lens. So the best way to apply your lenses is you are going to get the lenses out on your fingers, take them on your fingertip, then wide open your eyes, put your lenses on the white part of your eyes, and then just move your eyes a little, and the lenses will get uh, catched up in the in the pupil, like they will get set in the pupil. Okay. Okay, you can see the way has applied the lenses in, like she has applied lens in one eye. Oh my god, जब आपकी आंखें कितनी different लग रही है after applying the lens. Yes, they look very different, and especially brides को लगाना बहुत मतलब मेकअप को पूरा एक अलग ही लुक देता है, एंड फोटोज कम आउट रियली वेरी वेल लेंसेज लगाने पे। थोड़ा सा पानी निकलता है, दैट इज नॉर्मल। थोड़ा सा इचीनेस होता है फॉर 30 seconds or 1 minute, दैट इज completely normal. Okay. Okay, so you can see कि after applying the lenses, we are actually getting a little bit of watery eye. That is absolutely fine. Nothing to worry about it. And that is also one of the reasons why you're going to put the lenses before doing the makeup. Because suppose you have done the full face makeup and now you're applying the lenses and you're getting all watery eye. You will just end up ruining your makeup also.
So that is why I वैसे always apply the lenses before. वैसे कई बार मैंने मेकअप के बाद भी लेंसेज लगाए हैं. एज आई सेड, अपना मेकअप वाटरप्रूफ होता है, तो मैंने कई सारे ब्राइड्स को आफ्टर द मेकअप भी लेंसेज लगाए हैं. एंड ऐसे जो प्रोडक्ट्स में यूज कर रही हूँ एंड जो टेक्निक्स में यूज कर रही हूँ फिक्स करने के लिए, तो अगर आप स्टार्टिंग में भूल जाओ ना, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट बाद में लगाने के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. सो लेट्स गो इन विद द अदर आई. Okay. So I just saw the chat box right now, and just give me a minute. So few people are saying that it was written there that we are going to provide the certificates for free. So if it was written there, I will check with the team and will confirm you. Just give me some time. Let me just confirm with the team and I will inform you then. Okay? Right in this session only I will inform you. Just give me some time. ओके, सो नाउ लेट्स क्विकली मूव बैक टू द मेकअप. वापस से हम मेकअप की तरफ मूव करते हैं. मैंने दोनों आंखों में लेंसेज लगा लिए. लेंसेज हमेशा व्हाइट एरिया में लगाना, और फिर प्यूपिल्स को धीरे से, मतलब आईज बॉल जो है ना आपके, जो ब्लैक ब्राउन व्हाटएवर कलर के है, उसको धीरे से मूव करना है, तो वो लेंसेज को कैच कर लेंगे. ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड गो बैक टू आवर आई मेकअप. Yeah. सो मैंने ब्राउन शेड लगा लिया था. एंड नाउ इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू गो इन विद सम कलर्स. अगर रिसेप्शन मेकअप है तो यूजुअली कलर्स यूज करते हैं, ब्लू, वाइन, रेड, पिंक. बहुत अलग अलग कलर्स में लहंगा बाय किया जाता है, या फिर इवनिंग गाउन होता है. वो कलरफुल हुआ तो आप कलर्स यूज करोगे. Right now I'm keeping it in browns and reds only. So next जो है वो आपके ड्रेस के हिसाब से आप कलर ले सकते हो. ऑरेंज जो मैं अभी कर रही हूँ, ये सारे ड्रेसेस पे चले जाएगा ऑन ऑल द कलर्स. ओके, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट अपना प्रॉपर जो कलर्स पार्ट है उस पे आएंगे. आपने एक बार ट्रांजिशनल कलर वगैरह अप्लाई कर दिया, यू हैव अप्लाइड द होल ट्रांजिशनल कलर एंड एवरीथिंग. नाउ यू आर फाइनली गोइंग टू स्टार्ट विद द color part here. So for choosing the color, you can either go with the dress that the bride is wearing, or you can just go with the shades that the wear is teaching you, because these are some of the shades that can go with almost all the dresses that one could wear with. Yes, Divya. ओके, सो जो शेड मैं ले रही हूँ, इट हैज अ टिंट ऑफ ऑरेंज एंड रेड. ऑरेंज और रेड का दोनों का टिंट है. बिल्कुल थोड़ा सा लेना है. आई डोंट वांट दैट कलर टू लुक वेरी ब्राइट. सो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ. जिस ब्रश से मैंने पहले ब्लेंड किया था, अब वही ब्रश से मैं अप्लाई भी करूंगी आगे के सारे शेड्स. एंड जस्ट आपके ब्राउन के नीचे आप उसको इस तरीके से लगाओगे एंड ब्लेंड. So, okay, Divya, what was the shade name? The shade is in between of red and orange. Okay, शेड का कोई नाम इस पैलेट पे ना, किसी भी शेड के नाम या नंबर्स नहीं है. I was just confused कि मतलब वो नाम, तो मैं questions पढ़ने लगी तो I just missed that part, इसलिए I was asking कि कौन सा था. Yeah. तो yes, अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना नेक्स्ट जो मेजर हमारा कलरिंग पार्ट है उस पे आएंगे. एंड जो कलर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट कलर इज हमारा, it is somewhere between the orange and the red. Okay, we do not want to keep it like a lot of red or something like that. We want to keep it a little subtle also. So we are going in between the red and the orange. And also we cannot just jump to a color, right? We need to create little bit of base also. So for that reason, we are putting this color on a crease area. Okay, so there were a few questions. Just 1 second, I'll take my next color, and when I'm blending it, I'll take the question. So जो next color मैं ले रही हूँ, that is a bright pink shade. ये भी थोड़ा सा लेना है, और जहाँ पे आपने orangish red shade लगाया है ना, उसी के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ. For मतलब जो मेरे को exact color चाहिए ना, उसके लिए ये दो shades I'm mixing it. So I'm taking this bright pink shade from my palette. I'm using the same brush. I haven't changed my brush.
Yes, Saloni. Yeah. So next हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर in order to create the shade that we want, what we are doing is we are mixing two colors here. One was the orangish and red type of shade, and the other color that we are using right now is like bright pink shade, and we have applied it just below that orange and red type of shade here. Okay, and right now she's just placing the colors. If you can see, Divya is not really blending it, she's just placing the colors here. Okay. आफ्टर एक बार आप शेड को अप्लाई कर लो दोनों आईज पे, चेक कर लो जो शेड आपको चाहिए वो बराबर आया है नहीं आया है. जैसे अभी माय शेड्स आर ओके टू गो एंड नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड देम. So next हम क्या कर रहे हैं? You can see that the shade that we wanted, जो shade हमें चाहिए था, वो shade हमारा properly create हो गया है यहाँ पे. And next इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम उसको properly blend कर रहे हैं. You can see we are just using the same brush, we are just blending the whole color in. ओके सेलिन, व्हाट वाज द क्वेश्चन जो मैंने उस टाइम स्टॉप किया था? Yeah. So there was a question that what can we do to hide large pores on our face? अगर पोज ज्यादा बड़े हैं तो कंप्लीटली हाइड नहीं होंगे, वो दिखेंगे बट फोटोज में नहीं दिखेंगे या थोड़े डिस्टेंस से नहीं दिखेंगे. फॉर दैट यूज पोर्स के लिए अलग से, इवन दिस इज अ वेरी गुड प्राइमर फॉर पोर स्किन जो मैंने अभी यूज किया है एफसी का. नहीं तो फिर बेनिफिट का एक प्राइमर आता है. I don't have it handy with me right now. नहीं तो मैंने दिखाया होता. That is a poreless primer. Especially जिनके स्किन में बहुत ज्यादा पोर्स है, उनको पोर्स के लिए जो प्राइमर आते हैं वो बाय करना है. Okay. So if you have big pores on your face, you can always go for the primers that are poreless. For example, Benefit ka, there's a primer called as Pore Perfect. I think that its name is Pore Perfect, right, Divya? पोर परफेक्ट है या पोरलेस है? Just give me 1 second. I think it is Pore Perfect because there's I got it. I'll just पोर प्रोफेशनल. It is पोर oh, प्रोफेशनल. Pore. दिव्या पीछे आप ऐसे हाथ लगा दीजिए ताकि वो हाँ थोड़ा सा और क्लोज करेंगे. या परफेक्ट. तो अगर किसी के पोर्स बहुत बड़े हैं फेस पे तो आप ये वाला प्राइमर यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज दिस प्राइमर इफ यू हैव बिग यू नो विजिबल पोर्स ऑन योर फेस. ओके सो मूविंग अहेड, अभी हम यहाँ पे शिमर्स यूज करने वाले हैं, नॉट ग्लिटर्स. आई एम यूजिंग शिमर्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिमर्स एंड ग्लिटर्स? शिमर्स थोड़ा सा मेटालिक फिनिश देता है, शाइन देता है, एंड ग्लिटर्स थोड़े से कोर्स पार्टिकल होते हैं, यानी थोड़े से मोटे पार्टिकल्स होते हैं ग्लिटर के. तो अभी मैं शिमर्स यूज कर रही हूँ, वेयर जो आईबॉल एरिया मेरा जो रह गया है ना वहां पे, और शेड में ब्लेंड करते हुए आई एम गोइंग टू यूज शिमर कलर्स. So for that, again, आपको अगर ज्यादा कलर्स नहीं यूज करने हैं तो सिर्फ आप शिमर कलर का, जैसे यहाँ पे मैं वाइन कलर का शिमर यूज कर सकती हूँ. देन आई हैव शिमर्स इन ब्लू, ग्रीन, पिंक, बहुत सारे शेड्स में मेरे पास शिमर्स है. तो अगर आपको आई मेकअप जो आउटर एरिया है ऐसा सिंपल रखना है, आप सिंपल रखो, और अंदर में जो आईबॉल एरिया है वहां पे भी आप कलर यूज कर सकते हो. सो राइट नाउ आई एम यूजिंग द वाइन शेड just for y'all to know कि वो कैसे दिख के आएगा. So I'm going to take it in my finger. Shimmers हाथ से सबसे अच्छे से लगते हैं, but you can obviously apply with the brush also. But I feel जितना अच्छे से फिंगर से अप्लाई होते हैं ना उतने अच्छे से कभी ब्रश से नहीं होते हैं. And just eyeball पे dab and apply and blend. इसको simultaneously blend करना है. Okay. So next you can see that Divya is using her shimmers. Okay, she is not using glitters. She is actually using shimmers. The major difference between the shimmers and the glitters is that shimmers are more finer compared to the glitters. Glitters have little bit of chunkiness in them, but shimmers do not have any kind of chunkiness. They're very smooth. They're very fine in shape, and you can easily use them. Okay, so here you can see that Divya is applying the shimmers right above her eyeball or above her pupil. So what we are doing is we have taken the shimmers in our fingers, and with the help of the finger we are blending the shimmers
and we have just placed it over our eyeball, and then we have just blended it in. The best part about shimmers is that they are going to enhance your look, and also when you're working with shimmers, please, please, please use your fingers because they give you better effect compared to using them with the brushes. But of course, if you are not comfortable, if your client is not comfortable, then yes, you can go with the brushes too. But with fingers, they give you better effect. ओके सो इस तरीके से आपको शिमर्स अप्लाई करने हैं. आई हैव यूज्ड द वॉयलेट वाइनिश शेड. आप दूसरे कलर्स भी यूज कर सकते हो. इफ नॉट, इफ यू डोंट वांट टू यूज एनी कलर्स, ऑलवेज देयर इज रोज गोल्ड अलग अलग गोल्डन के एंड ब्राउन्स के शेड्स आते हैं. आप उसमें प्ले कर सकते हो इफ यू ऑल डोंट वांट एनी कलर्स ऑन योर आईज. बट अगर आप आई बॉल पे ना कलर शिमर्स यूज करोगे ना, दे लुक वेरी प्रिटी, लाइक यू ऑल कैन सी राइट नाउ. वो एक अलग ही फिनिश दे देता है आंखों को. तो यस, यू कैन सी कि हम लोगों ने जैसे ही शिमर यूज किया है, हमारा पूरा का पूरा लुक कैसे इनहैंस हो गया है, राइट? वो मतलब एकदम बेसिक जैसे ग्लैम्ड अप हो गया है. So yes, तो ये आई मेकअप का टेक्निक था. फर्स्ट you'll use a transitional shade, then you can go with dark brown, then the colors if you want to use. अगर आप आउटर में कलर्स यूज कर रहे हो, यानी आपके डार्क ब्राउन के बाद अगर आप कलर यूज कर रहे हो, लेट्स से ब्लू, तो फिर आप शिमर गोल्डन या रोज गोल्ड या फिर सिल्वर वर्क होगा तो सिल्वर कलर के यूज करोगे. यू वोंट यूज कलर शिमर्स, नहीं तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही नहीं दिखाई देगा. एंड अगर आपने बेस मेरे जैसे क्रिएट किया है आंखों का, तो आप अंदर में कलर्स यूज करोगे. प्लीज अंडरस्टैंड द टेक्निक्स एंड ब्लेंडिंग ऑफ द कलर्स. फिर आप जो कलर में चाहो वो कलर में आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो. Okay. So moving ahead, I'll do my eyebrows. अभी मैं मेरे eyebrows कर लेती हूँ. So for eyebrows, I'm using a VOV eyebrow palette. VOV का ये eyebrow palette है मैं जो यूज करने वाली हूँ. And in that, I'm using a dark brown shade. Okay. So after doing our eye makeup, now we are finally moving towards our brows. So for the brows, what Divya is using here is a uh, what was it? VOV, right, Divya? Yeah, VOV. Okay. So for brows, she is using VOV ka brow palette, and with the help of this palette, we are going to create a very cinched and very beautiful brows here. So सबसे पहले आप नीचे जो लाइन चाहिए आपको आईब्रो के नीचे की लाइन डिफाइन कर लोगे, and then you'll define the upper line, the angle and the length of the eyebrows that you want. Okay. So you can see that right now what Divya is doing is she is first like she is using a darker shade of brown here, and with the help of excuse me. So yeah, with the help of the darker brown shade, she has first made kind of what do you say border kind of thing Outer here, line. like an outer line of it. And then after drawing that outer line, she is just kind of filling it in. हमेशा आईब्रोज आपके हेयर के ग्रोथ के डायरेक्शन में फिल करना है. जैसे यहाँ के बाल ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं एंड इस तरफ के बाल ना थोड़े से वर्टिकल ग्रो होते हैं. तो जो ग्रोथ का एरिया होता है, जैसे ग्रोथ का ये रहता है ना, उसी हिसाब से आप फिल इन करोगे. Okay. So you're always going to fill in your brows in the direction of your uh, in the direction of the growth of your hair. Okay, never go opposite to them, otherwise you're not gonna get a beautiful look. Always go in the direction of your brows. Okay, so there were few questions here. Yes. Okay, so somebody was asking that, ma'am, how can we set our brows? How can we give our brows a little bit of thick look? No, आपके how जो to set? No. The question was how to set broad, thick eyebrows. how to set broad thick eyebrows. अगर
तो फिर सबसे पहले अगर ब्रॉड और थिक आईब्रोज है तो पहले आप कोम करोगे एंड फिर जो मैंने स्टेप्स बताए वो करोगे एंड उसके बाद एड इन वन स्टेप एंड बहुत कम फिल इन करना, क्योंकि ऑलरेडी आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, ओरिजिनली आईब्रोज थिन है उनको ब्रॉड करना है या जिनके आईब्रोज ऑलरेडी ब्रॉड है उनको कैसे करना है? जस्ट आंसर दैट so that I can explain it in a better way. Okay, so there's one more question. That ma'am, how are the revolution palettes? Revolution palettes are good. फिर इसको Okay. मैं एकदम लाइटली मेरे मस्कारा ब्रश से सेट कर रही हूँ ताकि बाद में भी वो मूव ना हो आईब्रोज मेरे. Okay. And you can see at the end of after doing the whole brows, we have just set it in using a mascara brush or maybe a spoolie that you have. Okay. So there is one more question, Divya. So what should we do if the facial hair are showing up through the foundation or the makeup? You cannot do anything. Facial wax करो, threading करो, बट अगर आपका बेस अच्छा हो ना तो 80% तक कवर हो जाता है, बट अगर बहुत थिक रही ना तो वो फाउंडेशन के कलर्स के बाल दिखते हैं, बट वो दिखते ही है. We cannot hide them. Okay. And So, also, ladies, we are just doing the eyes right now. Okay. Once we will move on to the base, you will get to know that how you're going to hide your pigmentation, your dark circles, your pimples, or maybe your acne. So don't worry, we will be covering that too. अब ये पिंपल कैसे कवर करना है, डार्क सर्कल्स एंड ये भी कवर किया जाएगा जैसे ही हम बेस करना स्टार्ट करेंगे. Yes, and Divya. as said, now we are moving to the face makeup. So for this, सबसे पहले मैं concealer use कर रही हूँ from the brand LA Girl Pro Concealer. The shade is Warm Honey. शेड है वार्म हनी. मैं डायरेक्ट कंसीलर यूज कर रही हूँ. अगर आपके पिंपल्स बहुत ज्यादा ब्लूइश हो गए हैं तो यूज द ग्रीन और द ऑरेंज कलर करेक्टर. ग्रीन ज्यादा बेटर रहता है अगर बहुत ज्यादा डार्क हो गए तो, नहीं तो यू कैन यूज द ऑरेंज कलर करेक्टर. अंडर आइज बहुत डार्क है तो ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करोगे. उसके बाद आप ये स्टेप करोगे. एप्लीकेशन एंड ब्लेंडिंग कंसीलर का और कलर करेक्टर का सेम रहता है. Okay, so I'm just going to apply this concealer मेरे अंडर आईज में या फिर जहां जहां पे मेरे को पिंपल्स या डिस्कलरेशन है वहां पे मैं इसको अप्लाई कर लूंगी. Okay. So next you can see that we have finally moved on to our face makeup. So what the very first thing when you start with the face makeup is to conceal all the pigmentation or pimples or the acne that you have on your face. If in case you have a lot of dark circles, like very high dark circles or very dark circles, and you have like acne or you have pimples, so in that case you first need to use a color corrector and then you can move on to the concealer part. But if you do not have very dark circles or very a lot of pigmentation, then that can be done using that can be a that can be hided using a concealer itself. Okay. So if in case you have dark circles, you can go with the orange color corrector. If you have redness around your face, maybe red pimple or maybe red acne, then in that case, you can go with the green color corrector. So after doing the color correction, you are going to do the concealing part. And the blending process and the application process remains same as you can see that we are doing right now. This is the same process. Okay. So आपको डैप करके कंसीलर को सेट करना है. डू नॉट स्वैप इट ऑन द स्किन. उसको डैप करना है, रब नहीं करना है स्किन पे. ओके. सो आपको पूरा का पूरा ये जो बेस है ना, इसको अच्छे से आपको डैब डैब करके सेट इन करना है. ओके. आपको ऐसे ड्रैग नहीं करना कि आप इधर उधर पूरा प्रोडक्ट मूव कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है. आपको ऐसे ब्यूटी स्पॉन्ज लेकर के या ब्यूटी ब्लेंडर लेकर के उसको अच्छे से डैब करके फिट इन करना है. ओके, सो आप देख सकते हो जो कंसीलर होता है ना वो ज्यादातर आपके स्किन टोन में ही लेना.
सो वो बहुत नेचुरली सेट हो जाता है. लाइक यू कैन सी अभी मेरा कलर एक सिंगल फेस का जो शेड्स था, जो डिस्कलरेशन था, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, नाउ इट हैज कम डाउन टू वन सिंगल टोन. And after this, we'll apply the foundation. Foundation I'm using from the brand Stromboli. Sorry, NARS brand है. And the shade that I'm using is Stromboli. Shade का नाम है Stromboli. Brand का नाम है NARS. After applying the concealer, we are going to apply the foundation. ओके, तो आफ्टर जब आपने अपना अप्लाई कर लिया होगा कंसीलर एंड करेक्शन कर लिया है, उसके बाद आप फाउंडेशन यूज करेंगे. तो फाउंडेशन जो यहाँ पर दिव्या यूज कर रही है वो नार्स का फाउंडेशन है जिसका शेड नंबर है स्ट्रॉम्बोली. ओके, नाउ जो हम लोगों ने अपना कंसीलर लिया था, इफ यू रिमेम्बर, तो कंसीलर जो था हमारा वो बिल्कुल हमारे स्किन शेड के अकॉर्डिंग था. हम लोग ने ऐसा क्यों किया? मतलब आप या तो एक शेड डार्कर ले सकते हो या तो अपने स्किन शेड का लो, ताकि जब आप उसको ब्लेंड इन करो तो वो इजीली ब्लेंड इन हो जाए, अलग से ना दिखे कि हाँ भाई कुछ लगाया हुआ था, ऐसा कुछ भी ना दिखे. इसलिए हम या तो अपने शेड का लेंगे या तो फिर एक शेड डार्क लेंगे, बस उससे ज्यादा नहीं जाएंगे. ओके. इसको भी फाउंडेशन को भी डैप करते हुए ही ब्लेंड करना है. जस्ट ट्रिक फॉर अ वेरी फ्लॉलेस बेस, आंखों के नीचे सबसे लास्ट ब्लेंड करना. पूरा फेस ब्लेंड कर लो, उसके बाद आप आंखों के नीचे आओ. तो जो आंखों के नीचे क्रीजिंग होता है ना, वो नहीं होगा. या फिर आपके अगर लाफ लाइंस ज्यादा दिख रहे हैं तो वहां पे भी लास्ट में ब्लेंड करो. जहां पे भी क्रीजिंग होता है ना, वो सबसे लास्ट करना. Okay, so Abhi, you can see what we are doing is we are just blending the foundation that we have put in. For blending the foundation also, we are just dabbing it in and we are not dragging the product. The reason why we are not dragging the product and dabbing it in is we do not want the product to move here and there. If you are going to drag the product is going to move and it will not get on the place and it will not do the part it is supposed to. That is why we are just dabbing the product in and not dragging it around. Okay. So yeah, and also remember that if in case, like, a very good tip given by Divya, any place where you feel there are wrinkles or you have lash lines or you can end up creasing your foundation, you're going to blend the product there in the very end. Okay, आप बिल्कुल लास्ट में वहां पर प्रोडक्ट्स को ब्लेंड इन करेंगे rather उसी वक्त करने के. इससे क्या होगा कि आपके जो क्रीसिंग वगैरह है वो कम हो. एंड ऑल्सो the beauty blender that Divya is using here is a damp beauty blender. By damp we mean that it is not dripping wet and neither it is dry. It is just, it means that you're going to put it in the water, squeeze out all the water and then use it. तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो डैम्प है. डैम्प होने का मतलब है कि आप उसको पानी में डालिए, उसके बाद उसमें जो भी पानी होगा उसको अच्छे से स्क्वीज आउट कर दीजिए, बस वैसे हल्का सा गीला रहेगा, तब आप उसको यूज कर रहे हो. यस सर. So next we are doing is contouring. So contouring के लिए मैं Krylon Supra का palette use कर रही हूँ. And the shade that I'm going to use is NG1. NG1 shade use कर रही हूँ. And palette is Supra, Krylon Supra color. So जिन लोगों ने मेरा पहले भी सेशन देखा होगा उन्होंने मेरी काफी कॉन्टूरिंग ट्रिक्स देखी होगी. So this is one more trick. This shade goes with all skin color, fair, medium, dark, जो भी आपका स्किन कलर हो, ये कॉन्टूरिंग शेड सारे स्किन कलर्स में जाता है. एंड द ट्रिक टू डू अ परफेक्ट कॉन्टूर इज पाउट वगैरह कुछ नहीं करना है. ओके, कान के ऊपर से चालू करना है और नाक और आंखों का आउटर कॉर्नर जहां पे मीट होता है वहां पे एंड करना है लाइन. वेरी सिंपल. यहाँ पे कान के ऊपर से just draw one straight line इस तरीके से. and then blend it in immediately. उसको तुरंत ही blend कर दो. I'm using a dry sponge for blending the contour shade. तो blend upward direction में करना है, कभी भी downward direction में नहीं करोगे, हमेशा upward direction में blend करोगे.
इस तरीके से उसके ऊपर सिर्फ सिंपली डैप करते जाना है अपवर्ड डायरेक्शन में. Okay. So right now you can see what we are doing is we are contouring our face. So for contouring, what we are doing is we are basically just taking a darker shade. So for here, like you can see that we are using, she has used the Supra palette by she's using the Krylon Supra Supra palette by color. Krylon in the shade number NG1. And the trick to apply your contour is you're going to start your contour from above your eye, from above your ear tips, and you're going to end that line right below, like right at a point where you are going to find an intersecting point for your nose and for the tip of your eyebrow. Okay, so wherever you find that intersecting point, just end your line of contour there. Okay, so there was a question. Mm-hmm. So somebody is asking that, ma'am, concealers are used after foundation in many of the tutorials, please. Can you explain which is the right time to apply the concealer, after or before the foundation? आफ्टर भी अप्लाई करते हैं बट रिजल्ट्स बिफोर में ज्यादा बेटर आते हैं. मैक्सिमम प्रोफेशनल्स यूज द कंसीलर बिफोर द फाउंडेशन, पर देन एट द एंड इट इज योर चॉइस. दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, कोई भी तरीका गलत नहीं है. इट इज जस्ट व्हाट यू आर मोर कंफर्टेबल विद, या फिर आपको किस तरीके से ज्यादा सही करने बनता है. बट एज फार एज आई हैव सीन, कंसीलर पहले लगा के फाउंडेशन बाद में लगाते हैं तो फिनिश ज्यादा अच्छी आती है. So moving Okay. back to the contour, okay, just answer that. मैं एक बार सिर्फ contour की lines बता देती हूँ, Saloni, then you can Yeah. translate Sure, the sure. answer also and the contouring thing also. So पहले मैंने कान के नीचे से start करके चिन के नीचे, यहाँ पे usually क्या बोलते हैं उसको, डबल चिन यहाँ पे होता है, तो इसलिए जब भी हम contour लगाते हैं ना, इस तरीके से चिन के नीचे में आपको शेड कंप्लीट करना है. कान के नीचे से स्टार्ट करोगे एंड चिन के नीचे एंड करोगे. देन फॉर दी नोज, आईब्रोज के वहां से स्टार्ट करना है एंड स्ट्रेट पुल इट डाउनवर्ड्स टू द टिप ऑफ योर नोज. नाक के नोक तक आपको उसको पुल करना है शेड को, और नाक पे थोड़ा सा हल्का लगाना, बहुत ज्यादा डार्क नहीं. एंड फोर हेड पे ये जो आपके दोनों आईब्रोज के कॉर्नर है ना, उसके बीच में, नहीं तो फिर फोरहेड पे ये जो एंगल बनता है उसके बीच में, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, वहां पे आप आपका कॉन्टोर शेड लगाओगे. ओके, एंड देन ब्लेंडिंग प्रोसेस इज सेम, डैब एंड ब्लेंड. उसको ड्रैग नहीं करना, डैब एंड ब्लेंड. यस सर. Okay. So, so we have contoured our cheeks. Now we are going to contour our jawline. So in order to contour the jawline, most of the people have double chin here. So how you're going to hide your double chin or how you're going to minimize it, that you are going to contour that area. So for contouring, you're going to start from behind your ears and you're going to end that line below your chin. Okay? So start from behind your ears and end it at your chin. Then you're going to contour your nose. In order to contour your nose, you are just going to draw two lines on the bridge, like not the bridge of your nose, but like on the side of your nose. Okay. And when you're contouring your nose, always keep use the minimum product, because you might end up using a lot of products, and since that area is very small, it might just look all brown. Okay. We do not want that. So use very minimum products on your nose. Next, for the forehead, what you're going to do is you're going to draw a line right between the two brows that you're like right between your brows. You're going to draw a line and then you're going to blend it in the upward direction. Okay, there were few questions. एक सेकेंड में एक बार बेस कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट सेट इन होते जा रहे हैं तो बाद में ब्लेंडिंग नहीं होगा. सो आई जस्ट Okay. कंप्लीट द बेस and then I'll take all the questions together. Don't worry, I'll answer all your questions. Next we are doing is cream highlighter or liquid highlighter. For that, again, I'm using Tarte brand का shape tape. Shade is medium. और इसको हम अप्लाई करेंगे हमारे चीक बोन्स पे, इस तरीके से.
अपवर्ड डायरेक्शन में। देन नोज के ब्रिज पे, फोरहेड पे, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा टी बनाना है, लिप्स के क्यू पे, चिन पे, ओके। एंड देन ब्लेंडिंग प्रोसेस यहाँ पे जब कर रहे हो तो इट विल गो अपवर्ड्स, डैब ही करना है, ड्रैग नहीं करना है, ब्यूटी ब्लेंडर को डैब करते हुए ब्लेंड करना है सारी चीजों को। पर जब आप चिक एरिया पे वर्क करते हो, चिक बोन पे वर्क करते हो, तो हमेशा ऊपर की तरफ करो, सो दैट यू गेट अ अपलिफ्टेड फेस। आपको ड्रूलिंग फेस नहीं चाहिए, मेकअप के बाद चेहरा यंग दिखना चाहिए, ऐसे ऊपर की तरफ, मतलब ज्यादा यंग एंड प्रॉपर जो दिखता है ना, वैसे अपलिफ्टेड दिखना चाहिए फेस, ना कि ड्रूलिंग एंड एजेड। तो हमेशा ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे इस तरीके से। यस सलोनी। So, yes. So after contouring, we are going to highlight our face. So what we are doing right now is a cream highlighting. So for cream highlighting, we have used again a concealer. The concealer that we use is by Tarte in the shade medium. Okay. And now we have applied the concealer at the high points of our face. For example, we applied the highlighter right above our cheekbone, and we are applying all these things in the upward direction because we do not want our face to look droopy, or we do not want our face to look very aged. So for that, we are always going to apply the products in the upward direction. So we apply the product at like on our cheekbones in the upward direction. After that, we apply the highlighter on our bridge of the nose, and then on our forehead. So on the forehead, we have just created kind of T here. And after that, we have applied the concealer on our Q-tip area. Yeah, Q-tip area of our lips. And then we have just blended it in using a beauty blender. The palette name was James Charles by Morphe. Okay, so moving ahead, I'm doing a cream blush on. So cream blush on के लिए I'm using a lipstick palette from PAC. ये blushers के लिए भी use कर सकते हैं. It is very good for cream blushers. आपको अलग से buy करने की जरूरत नहीं है. All the lipstick shades are very pretty and the blush ons भी इससे बहुत अच्छे से apply होता है. So I'm doing a cream blush on. And the shade, I want a very naturally flush skin, ऐसा artificial नहीं चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से शेड ले रही हूँ. द शेड नंबर इज LP8, L for lion, P for pigeon, number 8, LP8. LP is lipstick basically. Okay, so next what we are doing is just sorry, I'm so sorry. Yes. just इसको है ना अपने contour और highlight के बीच में cheeks पे इस तरीके से apply करना है, and blending will go upwards. Without saying, blending हमेशा upward direction में होगी. Yes सलोनी. Okay. So next हम क्या कर रहे हैं, अपना blush apply कर रहे हैं. Now जब हम when we talk about the blushes, so here you can see that Diva is using a lipstick palette to apply the blush. So this is a palette by PAC and it is in the shade number LP8, and we are applying that blush in right between the contour and the highlight that we have created here. Okay. And you can see the blending is going in the upward direction. Every time you're going to blend, it is always going to be in the upward direction. Otherwise, you will start looking very droopy or very old, and we do not want that. So whenever you're blending, blend it in the upward direction. Yes, Okay, अब हमें set करना है makeup. Just 1 second, let me clean my fingers. हमेशा ये चीज याद रखना, अगर आप फिंगर्स से वर्क कर रहे हो ना, तो टाइम टाइम पे उसको क्लीन करो, वेट वाइप बाजू में ही रखो एंड कीप क्लीनिंग देम. सो नाउ व्हाइल सेटिंग द मेकअप, प्लीज सब लोग एकदम ध्यान देना, नहीं तो अंडर आईज में और लाफ लाइंस पे लाइंस बनेगी. टू अवॉइड दिस, प्लीज एकदम ध्यान से देखना, आपकी कभी भी अंडर आईज में लाइंस या व्रिंकल्स नहीं बनेंगे. ओके, तो सबसे पहले ब्यूटी ब्लेंडर से एक बार आप उसको इस तरीके से
सेट कर दोगे ताकि कुछ लाइन वाइन बनी होगी तो वो हट जाएगी. एंड देन इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ अ स्पॉन्ज थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में ट्रांसलूसेंट पाउडर लेना है और ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हुए ट्रांसलूसेंट पाउडर को अप्लाई करना है. थोड़ा ज्यादा लोगे एंड इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हुए यू विल नाइसली अप्लाई द ट्रांसलूसेंट पाउडर. इससे है ना लाइंस कभी नहीं बनेगी. 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भी मेकअप रहेगा ना तो भी वो लाइंस नहीं बनेगी. दिस इज अ वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक. Okay. So next you can see that we all face this issue that where we get a lot of crease lines or lash lines around our faces, especially around our lips and around our eyes. So in that case, what we need to do is we just need to sorry sorry. So yes, in that case, what you need to do is you just need to blend that area a little, and then just after blending that area, you're going to take a beauty blender, take some translucent powder on it, take some good amount of translucent powder on it, and then just press that translucent powder in your skin where you feel that you're going to get the laugh lines or you're going to get the crease lines. In this way, you're not going to get any kind of creases even if you carry the makeup for a longer period of time. You will not end up getting any kind of creases around. ओके एंड अब हम पूरा मेकअप सेट कर देंगे विद द सेम ट्रांसलूसेंट पाउडर ब्रश के हेल्प से. सिर्फ जो एरिया जहाँ पे क्रीज होता है वहां पे आप ब्लेंड करोगे और थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लगाओगे. बाकी एरिया में आप सिर्फ रेगुलरली ब्रश में लेके पाउडर ब्रश में लेके लगा लोगे तो भी मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है. So next what we need to do is we need to set the whole base, because whatever you have applied till now is a cream, right? And cream is going to move. We do not want it to move. Hence we are going to set the whole बेस. okay. Yeah, we are just going to set the whole base here. So what we need to do is we are just going to take a little bit of translucent powder in our brush, and we're just going to set the whole base here. ओके सो वंस आई एम डन सेटिंग माय बेस पूरा मेरा सेट हो चुका है. अब मैं लगाऊंगी मेरा मेकअप फिक्सर. नाउ वी आर गोइंग टू यूज आवर मेकअप फिक्सर. as we said, we want a transfer proof makeup and the makeup which does not comes out waterproof, transfer proof जो चाहिए एंड अच्छे से सेट रहना चाहिए, एकदम फ्लॉलेस दिखना चाहिए, अच्छे से सेट होना चाहिए. तो फॉर सेटिंग दिस वी हैव डन ताकि क्रीज लाइंस ना बने, लाफ लाइंस ना बने, कुछ भी ना बने, इसलिए हम लोगों ने ये प्रोसेस किया है. एंड ट्रांसफर प्रूफ करने के लिए वी आर गोइंग टू सेट अ मेकअप फिक्सर. एंड जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज किए थे like the foundation, concealer, both the concealers, under eye concealer and the highlighter concealer, सारे HD products थे and original. Do not buy copy, नहीं तो वो transfer proof नहीं होंगे. Okay, and just with the help of the setting spray, I'm just going to set the entire makeup. Okay. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक यूज कर रहे हैं अपना सेटिंग स्प्रे. सेटिंग स्प्रे जो हमारा है वो है, आई थिंक इट इज डर्मा कलर्स, राइट? राइट. ओके. तो जो हमारा सेटिंग स्प्रे है वो है डर्मा कलर्स का, एंड यूजिंग दैट सेटिंग स्प्रे वी आर जस्ट fixing all our we are just fixing everything here. Okay, nothing is going to move now. Yes, a makeup fixer is compulsory, otherwise you will not have that transfer proof or that long lasting, like you are going to have long lasting makeup. But the setting spray is a must because it will help you in not in being a transfer proof makeup, and it will also help you in even more making the makeup, like making your makeup last even more long. Okay, transfer proof की बात की है. I'm holding a white dry tissue, not a wet wipe, and then it is completely transfer proof.
थोड़ा सा दबाना है तो दबा भी लूंगी, तो भी इट इज एकदम व्हाइट का व्हाइट है मेरा ये। सो दिस इज द प्रोसेस। आपका मेकअप ट्रांसफर प्रूफ रहेगा, मोबाइल पे नहीं आएगा। व्हाइट टिश्यू ही मैंने लेके यूज करके दिखाया है फ्रॉम एनीवेयर, it is not getting transferred. Okay, then let's move ahead, do our under eye makeup, लाइनर, काजल, मस्कारा, लैशेस सब कंप्लीट करते हैं। सो क्विकली मैं एक आईज का करके दिखाऊंगी, and by the time you'll watch me doing the second eye, and I'll also keep answering the questions. So पहले मैं one eye को complete कर लूंगी, and then and then I'll do my other eye and simultaneously I'll answer all your questions, जो questions अभी तक pending रहे हुए हैं. So for that, first I'm doing the under eye eyeshadows. आंखों के नीचे के eyeshadows पे work कर रही हूँ. तो उसके लिए I'm taking the dark brown shade जो हम लोगों ने लिया था ना, second shade, transitional shade के बाद जो dark brown shade लिया था ना, वो shade लूंगी. उसके बाद the orange shade and then the pink shade. इसी सीक्वेंस में मैं अंडर आईज में ये सारे शेड्स लगाऊंगी. एंड जब भी हम अंडर आईज में शेड लगा रहे हैं तो विल कनेक्ट इट विद आंखों के ऊपर के आई मेकअप के साथ उसको कनेक्ट करना है. शेड अप्लाई करने के लिए आई एम यूजिंग द फ्लैट ब्रश एंड ब्लेंड करने के लिए और नैरो आई शैडो ब्रश, फ्लफी आई शैडो ब्रश. Okay, so you can see right now what we are doing is we are just blending the whole we are just blending the whole product, like not just the product, we are just getting all the makeup together. So what we are doing is we are doing the under eye makeup here. So for doing a under eye makeup, we are just using a flat brush here, and we are going to use like the same fluffy thin brush for blending it in. So the color that we have used here is the dark brown shade. If you remember that we used before, we are using that same shade here in order to apply it, and then we will just blend it in. Second shade, the reddish orange color. And then उसके बाद जो हमारा second shade है brown के बाद वो होगा हमारा reddish brown. मतलब same pattern होगा, जैसे आप ऊपर से कर रहे थे वैसे यहाँ नीचे करोगे आप. So And pattern is going to be same. And the third shade is pink. Okay, मैंने सारे shades apply कर दिए हैं and now I'm going to blend it with the help of a beauty blender. Okay, and अभी आप you can see कि हम लोगों ने सब कुछ apply कर दिया, and then अब हम इसको easily blend in कर देंगे. Okay, okay, Arjuna, for your question, please do not, like, if possible just give that shade to somebody else, because if you're using a foundation of lightest shade, that is going to oxidize and you will get that grayish kind of effect on your face. But for the light shade of concealer, you can use it for highlighting your face, but do not use the light shade foundation. Like if your foundation is just one shade light, you can still work with it. But if it is like 2 or 3 shades light, do not use it at any cost. You can use a lighter shade of concealer for highlighting your face, but not a foundation. Okay? Now for liner, I'm using my kajal from the brand Pro Art. उससे मैं पहले मेरे आंखों के ऊपर एक पतला सा लाइनर का लेयर बना लूंगी, and the wing I'll do it with a gel pot. What was the name of the liner that you're using? Pro Art. Pro Art. Okay. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर अपना प्रो आर्ट लाइनर यूज कर रहे हैं, एंड उससे हम एक सबसे पहले लाइन क्रिएट कर रहे हैं. उसके बाद हम अपना जेल पॉड लेंगे एंड उससे हम लोग विंग क्रिएट करेंगे. ओके ओके प्राचिता, फॉर योर क्वेश्चन, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, यू कैन नॉट ऑलवेज कैरी लॉट ऑफ शेड्स. So that is why if you see any of the makeup artists, just now like you saw, the way has that palette of Krylon ka palette. So in the same way, there are all the companies have different type of shades and they have these kind of palettes. So makeup artists generally carry these type of palettes instead of carrying
a lot of foundations with them. So in this way, you will be easily able to blend 2 or 3 foundations together and create a perfect shade for anybody. So always you can buy these kind of palettes and you can use them. Okay, So about the foundations, अगर आप high end bride कर रहे हो, तो yes, I have at least 5 to 6 foundations from MAC. Same with Huda Beauty, NARS के मेरे पास 2-3 foundations है. फिर PAC के foundations है. As a professional makeup artist, starting में ठीक है, you carry the palettes or something that comes in a set. जरूरी नहीं है कि एकदम बिगिनर लेवल पे ही आप सारे फाउंडेशन बाय करो. मैंने भी अपना किट धीरे धीरे बनाया है. वर्क करो, अर्न करो एंड देन अगेन इन्वेस्ट बैक इनटू योर वैनिटी. एक साथ सब चीज आप नहीं स्टार्टिंग में बाय कर सकते हो. फॉर स्टार्टिंग, सलोनी इज एब्सोल्युटली राइट. आप ऐसे पैलेट्स ले लो जिसमें सारे शेड्स है, फिर आप उसको मिक्स करके आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हो. बट इवेंचुअली इफ यू आर डूइंग अ हाई एंड ब्राइडल मेकअप, तो फिर वहां पे धीरे 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 आपको आपकी वैनिटी डेवलप भी करते जानी है. ऐसा नहीं है कि आपने वो एक पैलेट ले लिया एंड आप हमेशा उसी को यूज कर रहे हो. स्लो एंड स्टेडी, keep updating your vanity. I still keep adding new things to my vanity. It is a must do thing अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो. Okay, so moving ahead, I'm doing my liner. लाइन का विंग. विंग के लिए मैं आइकॉनिक का जेल पॉट यूज कर रही हूँ एंड आई एम यूजिंग अ लाइनर ब्रश. इट इज अ एंगुलर लाइनर ब्रश. आप स्ट्रेट वाला ब्रश भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है. एंड फिर जिस कॉर्नर्स पे मैं विंग क्रिएट करूँ. So right now you can see that we are creating a wing here. So in order to create a wing, we are using a gel pot here. This gel pot that the way is using here is by Iconic, and yeah, we are using a angular brush to create that, like an angular brush. But if you want, you can use a straight brush also, whatever is comfortable to you. इट्स नॉट आइकॉनिक नहीं है, इंग्लॉट का है. अरे Inglot का, I'm so sorry. मेरे को लगा मैंने आइकॉनिक बोला. I just oh yeah. It is Okay. Inglot. Okay. Okay, just give me 1 minute. Yes, it is very necessary for you to do the waterline wala eye makeup also. Otherwise, it will just look very incomplete. Okay, if you try doing it on yourself also, you will feel that yes, there is something missing on your face. So yes, that is why it is very important to do the under eye makeup also. Okay. So here I'm doing the wing. तो विंग के लिए जो आउटर कॉर्नर है आंखों का, वहां पे ऐसे पहले आप स्ट्रेट लाइन पुल कर दोगे एंड फिर उसको आपके लाइनर के साथ कनेक्ट कर दोगे लाइक दिस. So you can see we have just created a straight line first, and then we have just uh, connected that line with the liner that we created before. ये सबसे इजीएस्ट तरीका है विंग लाइनर बनाने का, और बहुत भी टेक्निक्स है, बट दिस इज द बेसिक एंड इजीएस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ विंग लाइनर. यस, एंड बाकी चीजें तो प्रैक्टिस से ही आएंगी. दोनों साइड का बराबर कैसे लगेगा ये तो प्रैक्टिस से ही होना है. ऐसे तो नहीं होगा. ओके, इवन टुडे आई गेट स्कैर्ड. मैं जब खुद पे लाइनर लगाती हूँ ना, इवन टुडे आई गेट वेरी स्कैर्ड कि मेरा लाइनर सही आएगा या नहीं, क्योंकि आई डोंट डू मच ऑफ मेकअप ऑन माई सेल्फ. बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, मैं खुद पे बहुत कम करती हूँ, बट क्लाइंट पे करते वक्त आई जस्ट ड्रॉ इट लाइक एज अ फ्री हैंड. सो दूसरों पे करना बहुत इजी होता है, खुद पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है. प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा. नेक्स्ट आई एम डूइंग द काजल. काजल अपने को हमको लाइनर के साथ इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर बोथ शुड कनेक्ट काजल करते वक्त. काजल अगेन आई एम यूजिंग फ्रॉम द प्रो आर्ट. जो लाइनर के लिए यूज किया था वही काजल के लिए यूज करी. तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं काजल. काजल जो आप देख रहे हैं हम लोग यूज कर रहे हैं
वो हम प्रो आर्ट का यूज कर रहे हैं एंड हम उसको ऐसे लगा रहे हैं कि वो हमारे जो इनर कॉर्नर है और आउटर कॉर्नर है दोनों को प्रॉपरली कनेक्ट करे। इसका क्या मतलब है कि आप देख रहे हो ना, जैसे लाइनर अभी हम लोगों ने लगाया है, तो हम ऐसे बना रहे हैं अपना काजल कि वो हमारे लाइनर के साथ कनेक्टेड सा दिखे, अलग सा नहीं दिखना चाहिए, वरना पता चला लाइनर अलग अलग ही दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे यूज करना है कि सब कुछ कनेक्टेड सा दिखे। Okay, now I'm up. Mascara or lashes will do it in the end. This is the part of eye makeup. अभी मैंने किया है वही सेम मैं मेरे दूसरे आईज पे करूंगी। मस्कारा एंड लैशेस हम लोग एंड में करेंगे। टिल देन सलोनी कोई क्वेश्चंस हो गए तो प्लीज टेक देम। I'll Yeah, yeah. answer them. Okay. So there was a question that, ma'am, why have you used a makeup fixer before applying the kajal, liner, and lipstick? Shouldn't it be applied in the end? एंड में भी अप्लाई करेंगे, पर बेस को एक बार फाइनल सेट करने के लिए हमने पाउडर से सेट किया है, पर उसको पूरा लॉक करने के लिए नहीं। तो जब तक मैं बात भी कर रही हूँ, मैं आई मेकअप भी करते जा रही हूँ, सब कंप्लीट होने तक आई डोंट वांट लाइंस टू बी फॉर्म्ड। इसलिए मैंने इसलिए हमेशा पहले और एंड में दोनों टाइम आप मेकअप फिक्सर लगाओगे। आई विल बी यूजिंग इट इन दी एंड ऑल्सो, डोंट वरी। एंड अगर एंड में लेट हो रहा है, छूट भी गया, तो एटलीस्ट वो बेस इज सेट, अच्छे से सेट हो गया है बेस। एंड में छूट भी गया तो भी मेकअप कहीं अभी मूव नहीं होने वाला है। Okay. So, yeah. And so, there was a question कि ma'am, जो मेरा काजल है that smudges a lot. So, what can I do for that? दैट क्या होता है काजल को? Smudge हो जाता है और काजल is getting smudged up. कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हो आप? प्लीज चेक कि आपका स्मच प्रूफ काजल है। नॉट ओनली द कंपनी शुड क्लेम कि वो स्मच प्रूफ है, इट शुड एक्चुअली बी अ स्मच प्रूफ काजल। जैसे ये प्रो आर्ट का बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है, मैंने लगाया इमीडिएटली ड्राई एंड सेट होता है। तो उस टाइप का आप काजल बाय करिए। एंड काजल लगाते वक्त पुल इट अ बिट डाउनवर्ड्स एंड देन अप्लाई इट, तो बराबर वाटर लाइन पे लगेगा, तो भी स्मज नहीं होगा। Yep. And okay. So, there's a question. What is the best translucent powder I can go for? बेस्ट एज सच जो मैंने अभी यूज किया मिस्क्लेयर का, वो भी अच्छा है। इफ यू वांट टू डू अ पॉकेट फ्रेंडली ट्रांसलूसेंट पाउडर, नहीं तो फिर हुडा ब्यूटी का बहुत अच्छा है। देन आई ऑल्सो हैव वन ट्रांसलूसेंट पाउडर फ्रॉम लॉरा मर्सी। फिर पीएससी का भी है, ये सारे ही बहुत अच्छे हैं। तो आपके बजट के हिसाब से आप ले सकते हो। क्राइलॉन से लेके जो मैंने यूज किया अभी मिस्क्लेयर है, इट इज अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली ट्रांसलूसेंट पाउडर एंड सेट भी बहुत अच्छे से करता है मेकअप को। And the most expensive one is the Laura Mercy, in my vanity at least. सबसे cheapest is I guess Krylon, then Miss Claire, and then all fall in line. Huda Beauty है, फिर बहुत सारे हैं और सारे अच्छे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉकेट फ्रेंडली है तो वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, इट वर्क्स वेरी फाइन। Okay. Vaishali, for your question. Okay. There's a question, Divya. Vaishali is asking that, ma'am, for how long can we use a particular foundation? Like, what is the shelf life basically? Because I've seen a lot of YouTubers using the same foundation for years. ओके, सो शेल्फ लाइफ कैसे देखना है, मैं थोड़ा सा जूम करके स्क्रीन के पास लाने की कोशिश करूंगी। बट कुछ कुछ ब्रांड्स के शेल्फ लाइफ से भी ज्यादा चलते हैं फाउंडेशन, और बहुत अच्छे से चलते हैं। बट आइडियली इट इज नॉट सपोज टू बी यूज्ड मोर देन 3-4 months आउट ऑफ द शेल्फ लाइफ। यानी शेल्फ लाइफ हो जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने में वो प्रोडक्ट को फिनिश कर दो। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट यू ऑल नो हाउ टू सी दैट। शेल्फ लाइन कैसे देखना है कोई भी प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट्स का एक्सपायरी डेट नहीं होता है, शेल्फ लाइफ होता है। फॉर दैट आई जस्ट ट्राई टू गेट इट एज क्लोज एज पॉसिबल फ्रॉम द कैमरा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डब्बा बना हुआ है, एक डब्बा यहाँ पे, कैन यू ऑल सी? उसके ऊपर लिखा है 24 months।
So from the time I opened, मतलब मैं सारा सीलिंग ओपन कर दूं फाउंडेशन का, उसके बाद आइडियली ये फाउंडेशन मैं 24 मंथ्स तक, दैट इज 2 साल तक मैं यूज कर सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने ऊपर नीचे. ओके, सो वंस अगेन मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ सो दैट यू ऑल कैन सी इट क्लियरली. इस तरीके से डब्बा बना हुआ रहता है जो ओपन किया हुआ है और उस पे आपका शेल्फ लाइफ लिखा होता है. Yep. ओके, And I feel this is a very good trick. मेरे को ये ट्रिक पता चली थी when I was in first year. तब मुझे पता चला कि ओह ऐसा भी होता है क्या. I was like अरे ये तो बहुत सही चीज है. So yeah, this is a very good way of understanding that till when you can use your products. So just see the dabba over there, and if you whatever is written over, like whatever month or basically months में ही दिया होता है, तो whatever month is written over there, that simply means the date you are going to open, like you are going to open the seal of the product. From that day to the given month, you can use that product. एक सेकेंड, सॉरी, आई यूज द रॉन्ग वाइप, जिसपे लाइनर लगा हुआ था वो मैंने यूज कर लिया, तो माय बेस गॉट स्पॉइल्ड. एनीवेज, Okay, makeup fixes that Tessa used was by Dermacolor, and yeah, you can go for it. That's a great brand to use. Any brands for long-lasting lipstick? ये जो पीएसी का मैं लिपस्टिक पैलेट यूज कर रही हूँ ना, ये बहुत अच्छा लास्ट करता है. एंड आई विल आल्सो शो यू अ ट्रिक टू मेक योर लिपस्टिक लास्ट रियली वेरी लॉन्ग. मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी आपको जब मैं लिप्स कर रही हूँ तब. अभी क्वेश्चंस प्लीज जितना हम लोगों ने देखा है ना उसमें पूछो, जो आगे का होगा अगेन आई विल गिव यू ऑल टाइम टू शूट क्वेश्चंस, तब आप पूछ सकते हो. Okay. Okay. Divya, can you give some like some suggestions for foundation and primers also? As in suggestion, as in what case? Like they just ask for the best foundation and primers. बेस्ट फाउंडेशन ऐसा कुछ नहीं होता है. लाइक इवन द क्राइलॉन सुप्रा पैलेट के जो फाउंडेशन है दोज आर आल्सो वेरी गुड. 6-7 घंटा मेकअप अच्छे से रहता है, पॉकेट फ्रेंडली है, पर बहुत अच्छे से है. वो आपके ब्लेंडिंग और सेटिंग पे ज्यादा डिपेंड करता है. डू नॉट यूज मेबेलिन, आई एम रियली सॉरी, ऐसे किसी ब्रांड को नहीं बोलना चाहिए, बट मेबेलिन के बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं. आप उनको कितने भी अच्छे से ब्लेंड करो, कितना भी सेटिंग स्प्रे लगाओ, कोई भी प्राइमर यूज कर लो, फिर भी आई हैव सीन मेबेलिन के फाउंडेशंस ये हो ही जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो ही जाते हैं, यानी थोड़े से ब्लैकिश हो जाते हैं. सो ट्राई अवॉइडिंग मेबेलिन, लॉरियल. And I always thought that I was using the wrong shade. ये होता है आफ्टर सर्टेन टाइम ना, लाइक अरे मैं कोई भी शेड यूज कर रही हूँ, इस ब्रांड का मेरे को शेड ही नहीं सूट कर रहा, बिकॉज द ब्रांड की वो फाउंडेशन की हर एक की अपनी अपनी प्लस एंड माइनसेस होते हैं ना. तो मेबेलिन एंड लॉरियल का ये बहुत मेजर इशू है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. ऑक्सीडाइज मतलब थोड़े टाइम बाद मेकअप काला हो जाता है या फिर केकी हो जाता है, दैट इज ऑक्सीडाइज. Okay. And yeah, MAC foundations are great. You can go with MAC foundation, right? MAC, Huda Beauty, NARS. NARS is the topmost brand for foundation, which I know is gives a very good coverage also, and बहुत प्यारा finish है उसका. उसके बाद I'll say Huda Beauty and MAC Falls, दोनों के foundations बहुत अच्छे हैं. NARS के इंडिया में easily available नहीं होते हैं, तो you can go for Huda Beauty and MAC one. Okay. So, Tripti, banana powder and translucent powder are like shades of banana powder is a shade of translucent powder. So there are shades in translucent powder. Translucent powders come in different shades. One could be like the white one. One could be a little to the
for dusky skin tones, you cannot use the white translucent powder because it will not look very nice. वो अलग से दिखेगा. So in that case, use the banana powder because if you see, they are little on the yellowish side, or they will have little bit of brown or yellow shade to it. So they are called as the banana powders. Okay, translucent powders basically are white, and banana powders are they have little shade to it. Okay, here our eyes are complete. If mascara or lashes are remaining, that will do after eyes and face को हम पूरा complete कर देंगे. एकदम last में हम लोग ये करेंगे lashes and एक second है, just 1 second. This eyes have Okay. Uh, Okay, I think the camera का angle की वजह से मेरे को ऐसे दिख रहा है. When I'm looking it in the mirror, it is completely aligned, and when I'm looking at the screen, it is looking ऊपर नीचे. But I think वो camera angle की वजह से हो रहा है. okay. Okay. So now let's move to the lipstick. तो lipstick palette मैं use कर रही हूँ from the brand PAC. PAC का lipstick palette जो हमने blusher के लिए भी use किया था. And the brush, lipstick brush लेंगे हम. So जैसा पूरा base है उसी हिसाब से lipstick. We are not going very bold nor very light. I'm using this shade of pink. इसको lasting कैसे करना है? I'll show it to you all. Don't worry. पहला आप एक लेयर लगा लोगे लिपस्टिक का. पहले आउटलाइन बनाना है, फिर लिप्स को फिल इन करना है. उसके बाद जब एक लेयर हो जाए तो ड्राई टिश्यू पेपर रखना और ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा लेना. उसके बाद go in with the second coat of lipstick. It will last really very long. So next हम करेंगे, we are going to do our lips. So the trick for doing the lips is you are first going to line your lips, then you're going to fill them in. Once you have filled them in, use a dry tissue paper, put them on your lips, use little bit of translucent powder, like put little bit of translucent powder on, and then apply the second coat. It will help your lipstick to stay a little more longer. Shri- Shringer, you cannot use the banana powder on like people who are on the fairer side because then they will start looking like a little dull or things like that. If you're little on the fairer side or you have medium skin tone, go with the normal translucent powder. But if you're a little bit on the duskier side, then you can go with the banana powder. Okay. For dusky skin tone, you're going to use the banana powder. For fair or medium skin tone, you're going to use the normal translucent powder. Okay guys, एक trick दिखा रही हूँ to make your lips look more poutier and smile upwards. जैसे smiley type face दिखे उसके लिए एक trick बता रही हूँ. So ये जो outer line आपकी बनती है ना lips की, is it visible? मैं थोड़ा सा mirror की तरफ bend हो रही हूँ तो भी. Okay. So ये जो outer line होती है ना. ना अभी आप बाहर चले गए. आगा. अच्छा ठीक है. एक second. Let me shift my mirror then. अब दिख रहा है? Yeah, अभी दिख रहा है. तो ये जो आउटर लाइन होती है ना उसको आप थोड़ा सा पुल करोगे एंड कर्व के साथ ऊपर के लाइन के साथ मिक्स करोगे लाइक दिस. ओके. सेम ऑन दी अदर साइड. दोनों साइड का हो जाएगा तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा. So right now you can see what we're doing is we are just yeah. So what we're doing right now is we are just making an outline of our lips, and we are while doing that outlining, what we're doing is we are merging the lower lip line to the upper lip line so that we get an illusion of like a smiling face.
सो नाउ यू ऑल कैन सी थोड़ा सा लिप्स ना अपवर्ड ऐसे थोड़ा सा स्माइली टाइप का दिख रहा है. जैसे ही मैं पूरा फिल इन करूंगी इट विल लुक मोर प्रोमिनेंटली, बट एक डिफरेंस ध्यान में आ जाएगा. Okay, Divya, there's a question coming a lot that how is Lakme's foundation? नॉट गुड. सेम प्रॉब्लम, ऑक्सीडाइज हो जाता है. And I feel there are not lot of shades in Lakme. Lakme के बहुत limited shade range है. नहीं, तो शेड्स तो काफी है लैक्मे में एज फार एज आई नो, बट ऑक्सीडाइज हो जाता है. लैक्मे, लॉरियल, मेबेलिन का कवरेज भी एक तो बहुत कम है. बट मेबेलिन में वो जो दूसरा फाउंडेशन है ना, आई गेस द एचडी वन, दैट इज गुड, नॉट द रेगुलर वन. the Fit Me one is not good. I don't remember what it is. Okay, I think you are talking about कि Maybelline का जो Fit Me one है, that oxidizes very easily, and there is one more by Maybelline. It is called as something super करके, हाँ, something like that that. one is good. हाँ, that उसका concealer is also good. Okay, so here I've done my lips. अब मैं क्या करूंगी, इस तरीके से एक ड्राई टिश्यू पेपर को रखूंगी एंड फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर से मैं डैप कर दूंगी लिप्स पे. So you can see right now we are just using a tissue paper. We are dabbing the translucent powder over it. It will help us to have a long lasting effect. Okay, I think Forever 52 के सारे ही products काफी अच्छे हैं. So I think उसका जो loose powder होगा वो भी I think it should be nice. फॉरएवर 52 का लूज पाउडर अच्छा है. Acha, there's a question, Divya, that how do you actually choose a lip shade for yourself? एक तो ड्रेस कलर, दूसरा योर मेकअप. अभी मेरा पूरा मेकअप रेड, ब्राउन एंड पिंक्स में है, तो उस हिसाब से. नहीं तो तीसरा, इफ यू डूइंग अ वेरी न्यूड मेकअप, देन यू ऑल कैन गो ईदर विथ एकदम न्यूड शेड्स, नहीं तो फिर एकदम बोल्ड शेड. बीच का ये शेड न्यूड मेकअप के साथ यूजुअली नहीं जाता है. सो इसके लिए आई थिंक द एक्सपीरियंस विल ओनली टीच. ऐसा कोई टेक्निक नहीं है लिप शेड चूज करने के लिए. बट यस, वार्म स्किन टोन है तो वार्म शेड्स लो, एंड कूल स्किन टोन है तो फिर कूल शेड्स लो. Yep. So if you have warm shades, go with the warm shaded lipsticks, and if you have light shades, go with the light shades one. Okay, Zua, we will try to show you that in the end of the session. Yes, Kajal, that is a very good palette. You can go for it. सो इस तरीके से ना लिपस्टिक कोई भी हो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है. अगर ड्राई टिश्यू पेपर नहीं रहा ना तो थोड़ा सा ब्रश में लेके, जैसे मैंने एंड में किया, डायरेक्टली लिप्स पे आप ट्रांसलूसेंट पाउडर डैप कर सकते हो. अगर ड्राई टिश्यू पेपर है तो ड्राई टिश्यू पेपर यूज कर लो, तो वो ट्रांसपेरेंसी भी उसकी कम हो जाती है. जो ट्रांसफर होना होता है ना लिपस्टिक को, वो भी कम हो जाता है. Now let's do the powder products quickly. For powder products, I am using like powder contour के लिए मैं Victoria Secrets का palette use कर रही हूँ, and the contour shade that I'm using is this one in the chocolate shade. So with the help of an angular brush के help से, just one second, I need to reset my mirror. एंगुलर ब्रश के हेल्प से इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में आप कॉन्टूर पाउडर लगाओगे. कॉन्टूर पाउडर भी उसी जगह पे उसी एंगल में लगाना है जिस एंगल में आपने आपका लिक्विड या फिर क्रीम कॉन्टूर यूज किया है. So now we are just applying our liquid. We are just going to apply our liquid. Sorry,
powder products now. So right now we are applying our contour. The contour you are going to apply is always going to be where you applied your cream contour, and it is going to be in the same direction. No, Creative Hub, the L'Oreal ka foundation is not that good. Please don't go with it. Mm. The good names for the foundation was MAC. You can go with NARS. You can go with Huda. You can go with MAC. You can go with PAC. You can go with Forever 52. Okay. अब मैं मिस क्लेयर का पैलेट यूज कर रही हूँ फॉर द ब्लशर। बहुत थोड़ा सा लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी है, तो मैं थोड़ा सा भी लगा लूंगी ना तो माय चिक्स विल स्टार्ट ब्लशिंग ऑन रियली वेरी वेल। मतलब बहुत ज्यादा ब्लशर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ब्लशर लगाने का तरीका, पहले आप ब्रश में ले लोगे इस तरीके से, देन उसको हाथ में थोड़ा सा एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव करोगे। यू वोंट डैब द ब्लशर। हाथ में इस तरीके से डैब करके एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव करोगे एंड आपके ब्लशर की ऊपर ही उसको रोटेशनली अपवर्ड्स मूव करते हुए अप्लाई करना है। So yeah, next हम अप्लाई करें अपना ब्लश, एंड यू कैन सी कि ब्लश भी हम लोग बिल्कुल वहीं अप्लाई करें जहाँ पे हम लोगों ने ब्लश अप्लाई किया था, एंड हम उसको रोटेटिंग मोशन में अप्लाई कर रहे हैं. ओके ओके. So one more thing, there is one question going around that if the what do you say, the certificates are free or not. So I just confirmed with the team, the certificates for this live is not free. The live that is going to happen on Thursday, उसका recording, उसका certificate, उसका PDF, everything is free. But for this session, the certificates or the recordings or the PDF are not for free. वो वाला जो certificate है उसके free है. Okay. So yes, you can see we are applying the powder products here. सारे के सारे powder products हम लोग यहाँ पे apply कर दे रहे हैं. एंड आप हाइलाइटर, आप पाउडर में भी जा सकते हो, लिक्विड में भी जा सकते हो। आई एम गोइंग फॉर द लिक्विड हाइलाइटर। द ब्रांड इज ग्लैम 21, नहीं हाँ ग्लैम 21 ब्रांड है एंड द शेड इज 05। ओके, सो फॉर द हाइलाइटर कैसे काम करना है, आपको लगाओगे इमीडिएटली ब्लेंड करोगे। यू वॉन्ट अप्लाई इट एवरीवेयर एंड देन ब्लेंड, नहीं तो फिर ड्राई हो जाएगा। तो चिकबोन पे इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया मेरा लिक्विड हाइलाइटर। ओके, मैं एक साइड से फिंगर पे करके दिखाऊंगी, दूसरी साइड से ब्यूटी ब्लेंडर से करके दिखाऊंगी। इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में उसको ब्लेंड करते जाना है। So you can see कि अभी हम लोग यहाँ पे अपना लिक्विड फाउंडेशन लिक्विड हाइलाइटर यूज कर रहे हैं. तो फॉर लिक्विड हाइलाइटर हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था ग्लैम 21 का इन द शेड नंबर 05. 05 नंबर का हम लोगों ने ग्लैम 21 का हम लोगों ने लिक्विड हाइलाइटर यूज किया है. आप ऐसे चीक बोन एरिया पे लगाओगे एंड देन उसको जल्दी से ब्लेंड इन कर देंगे. आपको उसको लीव नहीं करना है, अदरवाइज वो सूख जाएगा. ओके ओके. तो जब फिंगर भी आप इसी तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करोगे। आपने फिंगर से देख लिया, अब ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसी तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में करना है। तो यस यू कैन सी कि आप ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में उसको ब्लेंड कर रहे हैं. For the certificates, you just need to pay us 5 rupees and you will get the certificates. They are available on the app. As soon you will click on certificates, you will get the option of buy now. Just click on buy now and you'll be able to buy them. Tripti, for setting, we will recommend you to go with the translucent powder and not for the compact form. Okay, like the translucent powders are much better than compared to the compact. Okay, compact के कंपैरिजन में जो लूज पाउडर्स होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं. कॉम्पैक्ट पाउडर आप एकदम एंड में अगर ब्राइड कर रहे हो तो यूज कर सकते हो। कॉम्पैक्ट पाउडर हम क्यों नहीं सेटिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना थोड़े थिक होते हैं, तो कई बार केकी हो जाता है। तो सेट करने के लिए आप ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज करोगे एंड एकदम एंड में जब पूरा मेकअप वेकअप सब हो जाए, हेयर स्टाइल हो जाए, सब हो जाए ना, उसके बाद अगर आप ब्राइड कर रहे हो तो अंडर आईज में एक बार कॉम्पैक्ट एकदम लाइटली डैप कर दो, सेम ऐसे अपवर्ड पुश करते हुए। सो
और ज्यादा उसको एक ये मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा टू लास्ट मोर लॉन्गर। वैसे भी वो डिस्टर्ब तो नहीं होगा, बट जस्ट इन केस इफ यू वांट टू यूज द कॉम्पैक्ट पाउडर, दैट इज द टाइम टू यूज। Okay, there was one last question, Divya. So there was a question कि क्या हम लिक्विड हाइलाइटर्स को फाउंडेशन के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं? ये वाला जो मैंने अभी यूज किया ना, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ये वाला जो मैंने अभी यूज किया ना, ये नहीं आप फाउंडेशन के साथ मिक्स कर सकते हो, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ पिगमेंट्स। तो आपका चेहरा है ना ऐसा पूरा चमकीला चमकीला, अजीब सा चमकीला हो जाएगा, नॉट द ग्लोई चमकीला, वेरी क्या बोलते हैं उसको, गॉडी Metallic वाला चमकीला. चमक चमक हो जाएगा, एकदम गॉडी वाला हो जाएगा। बट ऐसे लिक्विड हाइलाइटर्स आते हैं जो फाउंडेशन में मिक्स किए जाते हैं, यू ऑल नीड टू बाय दैट, नॉट दिस वन, ओके। ये वाला आप नहीं मिक्स करोगे। फरसाली का जो आता है, देन आई थिंक और कौन से ब्रांड का आता है, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम्स, बट काफी सारे ब्रांड्स के आते हैं लिक्विड हाइलाइटर्स, जो आप फाउंडेशन में इस तरीके के पैलेट में मिक्स कर लोगे एंड फिर आप अप्लाई करोगे इस तरीके का, या कोई भी मेकअप मिक्सिंग पैलेट में आप मिक्स करोगे एंड देन यू विल अप्लाई इट। ओके, सो नाउ लेट्स फिक्स आवर लैशेस करते हैं। तो मैं एक बार वर्बली प्रोसेस को गो थ्रू करूंगी आपके साथ, एंड देन वी विल डू प्रैक्टिकली। पहले मैं वर्बली पूरा प्रोसेस बताऊंगी। ये जो लैशेस है मेरे रॉयल हेवन 6D लैशेस, 6D इज जस्ट द नेम, इट इज नॉट एक्चुअली 6D लैशेस, द ब्रांड इज रॉयल हेवन। ओके, सो मैं पहले आपको प्रोसेस गो थ्रू करवाती हूँ थियोरेटिकली। आप पहले मस्कारा नहीं, सबसे पहले आप लैशेस को इसमें से रिमूव कर लोगे, ग्लू लगाओगे एंड यू विल प्लेस इट असाइड। ग्लू लगाते से तुरंत नहीं चिपकाना है, तुरंत चिपकाने से कई बार ना ग्लू सूखता ही नहीं है बहुत टाइम तक, इट जस्ट डजंट ड्राइज अप, एंड फिर बहुत देर तक आपको वेट करते रहना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप बार बार सुखाने की कोशिश में ना उसको थोड़ा सा मूव कर देते हो, एंड यू जस्ट एंड अप मूविंग इट एंड दे डोंट लुक गुड। सो आप सबसे पहले ग्लू लगा लोगे, इसको रिमूव करोगे, स्टेप 1। स्टेप 2, अप्लाई ग्लू एंड प्लेस इट असाइड। स्टेप 3, अप्लाई द मस्कारा, ऊपर के साइड से भी नीचे के साइड से भी लैशेस पे। एंड देन स्टेप 4, सेंटर से आप इसको चिपकाओगे एंड देन द कॉर्नर्स। ओके, सबसे पहले आप लैशेस को रिमूव करोगे, सेकेंड आप ग्लू लगाओगे, थर्ड you'll apply mascara on the lashes, and fourth you'll stick the lashes starting from the center of the eyes। तो ये मैंने रिमूव कर लिए मेरे लैशेस। लैशेस एक बार रिमूव करने के बाद है ना, दोनों एंड पॉइंट्स इस तरीके से उसको जोड़ लो ताकि शेप ना बहुत अच्छे से आता है लैशेस का। मेजर कर लेते हैं, इज दिस द राइट साइज और नॉट? यस, दिस इज द राइट साइज फॉर माय आईज। सो आई विल जस्ट रिमूव द अदर लैश आल्सो। लैश को मेजर करना जरूरी है। अगर आप मेजर नहीं करोगे ना तो कई बार बहुत बड़ी बड़ी लैशेस लग जाती है और आंखें छोटी होती है, तो वो आंखों के बाहर दिख के आता है, दैट डजंट लुक गुड। ओके, सो जो मैं ग्लू यूज कर रही हूँ दैट इज फ्रॉम हाउस ऑफ लैशेस। हाउस ऑफ लैशेस का ग्लू मैं यूज कर रही हूँ। इट इज इन व्हाइट इन कलर। जैसे ही ड्राई अप हो जाता है इट टर्न्स ब्लैक, दैट्स माय क्यू कि लैशेस मेरे अच्छे से ड्राई हो गए। ओके, सो नेक्स्ट हम अप्लाई करने जा रहे हैं लैशेस। लैशेस के लिए हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, वी आर फर्स्ट गोइंग टू रिमूव आवर लैशेस फ्रॉम द लैश बॉक्स ऑफ कोर्स, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई द lash glue. You are going to wait for some time and then you're going to apply the lashes, because if you apply the lashes right after applying the glue, you will see that you will end up not drying your lash glue very easily. It will be a very hectic process then. So just wait for some time, let your glue set a little, and then you can just apply the lashes on. Sanjana, the basic difference between the BB CC cream, like BB cream, CC cream, and the foundation is about their coverage. Okay, so BB and CC cream are always are gonna give lesser coverage compared to the foundation.
फॉर एग्जाम्पल जो आपकी सीसी क्रीम होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, उसका फुल फॉर्म जो होता है दैट इज अ कलर करेक्शन क्रीम। ओके, तो वो आप यूज कर सकते हो। एंड एक होता है आपका बीबी क्रीम। तो ये जो होते हैं आपको लेसर कवरेज देंगे कंपेयर टू द फाउंडेशन पार्ट। एंड बीबी एंड सीसी क्रीम कैन बी यूज फॉर एनीबडी who has, who does not want a very heavy look and is just going around for like a party or something, but not like when you want a heavy coverage. You cannot use BB or CC cream. Um, Good brands for primers. I think हम लोगों ने starting में बताया था brands for the primer. You can go with MAC. You can go with Benefit, Kapoor Professional. You can go with uh, what is it? You can go with Fashion color which I use Fashion with Color. Yeah. मेकअप स्टूडियो इज वेरी नाइस। मिस क्लेयर का सिंपल मेकअप के लिए बहुत अच्छा है। मिस क्लेयर का भी प्राइमर प्राइमर तो काफी सारे ब्रांड्स के काफी अच्छे अच्छे हैं। Um, Divya, do you know about कि Swiss Beauty का जो प्राइमर है, how is it? विच ब्रांड? सॉरी, Swiss Beauty का। ओके ओके है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है। इट इज मीडियम वाला, मतलब मिस क्लेयर टाइप का है। यू ऑल कैन बाय इट फॉर सिंपल मेकअप, डे टू डे मेकअप के लिए अच्छा है। Afreen, if you cannot afford the products which are very high end, no, go for simple brands like which are not very expensive. For example, Swiss Beauty is not expensive. Blue Heaven is not expensive. So for practicing purpose, you can start with that and do not buy all the products all together. You can slowly buy your products, because even if you're going to buy all the products together, लैशेस लगाते वक्त है ना, मस्कारा हमेशा ऊपर भी लगाना लैशेस पे और नीचे भी लगाना, सो दैट अगर आपका कोई पाउडर प्रोडक्ट आई मेकअप करते वक्त रह गया होगा तो वो ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा। okay. Okay, so there's a question, Divya, कि आई के पास हाइलाइटर अप्लाई करना जरूरी है क्या? किसके बाद? आईज के पास हाइलाइटर अप्लाई करना जरूरी है क्या? कहाँ पे? Like, आपने देखा होगा ना, इनर आई एरिया पे लोग लगाते हैं हाइलाइटर। इट्स चॉइस, अच्छा दिख के आता है इसलिए लगाते हैं। बट इफ यू डोंट लाइक इट पर्सनली, जैसे मेरे को पर्सनली मेरे इनर कॉर्नर्स पे जब मैं हाइलाइटर लगाती हूँ तो मेरे को थोड़ी सी मेरी आंखें अजीब दिखती है। आई डू नॉट प्रिफर इट। सो दिस इज कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस। ब्राइड करते वक्त भी ब्राइड को पूछ लो हाउ शी फील्स अबाउट इट एंड देन डू इट। ओके, मेरे को है ना एकदम क्लियरली दिख नहीं रहा है वेयर आई हैव, जस्ट सेकंड, लेट मी यूज द एडिशनल लाइट सो मेरे को दिखाई दे मैंने कहाँ पे स्टिक किया है एग्जैक्टली। हाँ, दे इस तरीके से आप लैशेस को स्टिक कर लोगे। लैशेस स्टिक करने के बाद यस, थोड़ा सा हेवीनेस फील होता है आंखों पे कुछ टाइम तक, फिर धीरे धीरे सेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हैंडल ही नहीं कर पाओगे, बहुत ही हेवी होती है। एंड नाउ फाइनल हम लोग फिर से एक बार ट्रांसलूसेंट पाउडर पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे एंड देन विल सेट इट विद द हेल्प ऑफ अ मेकअप फिक्सर। पूरा मेकअप हमारा हो चुका है, नेक बचा है, बाकी फेस एंड ईयर्स आर डन। ईयर्स पे भी मैंने जब मैं बेस कर रही थी तो मैंने मेरे कान पे भी बेस लगा लिया था। अगर आपने नहीं लगाया, आपका वो रह गया है, तो गले के साथ भी आप कान को कवर कर सकते हैं।
So I hope you guys liked today's look. Let me just set it once and एक बार फिर से हम मेकअप फिक्सर लगा लेंगे. And the way you look very, like, you look so beautiful. Thank you, Saloni. Yep. तो अभी हम लास्ट से पूरा का पूरा बेस वापस से सेट कर रहे हैं एक बार यूजिंग द ट्रांसलूसेंट पाउडर एंड we'll again set it using a setting spray. Okay. There was a question, Divya, that should we apply the false lashes in the lashes or in the upper lid line? दी लैशेस एकदम लैशेस के जितने पास आप स्टिक कर सकते हो ना कर लो. सेल्फ में थोड़ा सा ऊपर लग जाता है, पर जब आप दूसरों पे लगाते हो तो लैशेस के जितने पास आप जा सकते हो उतने पास जाके लगा लो. So yes, you can see that we have completed our makeup and I hope that you all have liked and loved the session. If you have, please go on Google Play Store and please go and rate us there. That is really, really important for us. And if you want to check out the recordings and everything, you can go on the Pankhuri app. You will find the recordings there. You will need to pay us 5 rupees and you will get the recording for lifetime. Okay, and all the products are mentioned there. PDF is there. The like everything is there. Okay, whatever you need, the PDF products. And if you have any question or queries, you can always ask them on the app. We will try to answer them there. And yeah. So yes, guys, if you have liked and loved the session, please do let us know. And please leave a comment here. Please like the session. Subscribe to our YouTube channel because we are going to come up with more and more lives here. There is one more live happening this Thursday. So if you do not want to miss that, please subscribe to the YouTube channel so that you get to know about all the lives coming up. Okay? एक और लाइव आ रहा है अभी हमारा थर्सडे को. तो अगर आप हमारी चीजें मिस नहीं करना चाहते हो, लाइव मिस नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड गूगल प्ले स्टोर पे जाकर रेट करिए. ओके. So thank you so much for joining us today and I hope that you all have liked and loved the session. So till then, bye bye, take care and have a great day, guys. Bye, Divya. Bye, Saloni. Bye Bye, bye. everyone. Thank you so much for joining in.